Any questions right in the beginning? Any questions right in the beginning? So we are in our advanced climatology class. I hope you are understanding it. धीरे-धीरे समझ आ रहा है आपको, and you're not very intimidated by it. So any questions for the class which we had yesterday? Good morning, good morning, good morning. Subsidence inversion develops when the widespread layer of air descends. The air is compressed and heated, and as a result, lapse rate of temperature is reduced. तो गुरु अभी मैं ये बनाऊंगा, ये बनेगा नहीं. प्रॉब्लम ये है. प्रियांशु, is it due to uplift of warm air completely? देखें क्या कहना चाहते हैं. The front occurs in middle latitude and also characterized by steep gradient. चलिए ये भी देखते हैं. एक क्वेश्चन ये आया है और एक पूर्वी का आया है. दो क्वेश्चन हैं हमारे पास. Two questions I will be looking at. Any other questions right in the beginning? जय हिंद मधुकर, welcome to all students who logged in. We are in our advanced climatology classes. ये ऐसे concepts हैं जो बुक्स में दिए रहते हैं, लेकिन understanding them and relating them to real life is often a challenge. So इसलिए आपके पास ये classes में you will need the support of the teacher, and this is the time when you should be curious. This is the time when you should be able to think and link. Able to think and link. तो अब इसके लिए आपकी बेसिक जो है evaporation condensation ये जरूर होना चाहिए. सर्वेश्वर कह रहे हैं सर एक बार ऑक्लूडेड फिर से बता दीजिए. ठीक है सर्वेश्वर, तो एक तीसरा डाउट आ गया, ऑक्लूडेड भी फिर से बताना है. एनीथिंग एल्स? Some people had asked sir environmatics की क्लास कब होगी, तो environmatics की क्लास आज शाम को होगी. So everyone, tonight we will have the environmatics class again. I think हम उसमें forest और energy ये दो areas पर पहुंच गए हैं. I would want you to keep that in mind. I'll be talking about forest and energy in this. चलिए इवनिंग की क्लास में क्या होने वाला है. इवनिंग में GS क्लास is about Indian urbanization and some very specific aspects of irrigation in India जो हमने water resource में बात किया था. So we'll be talking about that also. ठीक है, और कोई डाउट नहीं है. So 5 minutes given to this. Now I can come into your questions then. So पहला, let us read what does it say. So I hope all of you are able to read it. This is something about ये occluded front है और ये warm front है, जहाँ से भी इन्होंने पढ़ा, जो भी बुक से पढ़ रहे हैं. So आप देख रहे हैं cold air, cool air and बीच का warm air has been pitched off. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है. NCERT से है, प्रियांशु ने लिखा है NCERT. तो NCERT में भी आपने डायग्राम देख लिए. Can you see दो air masses are catching up with each other? So that is occlusion. So its contact zone is called the cold front, whereas if the warm air mass movement towards the cold air mass, its contact zone is called warm front. ठीक है. So ये तो हमने देखा aggressor mass क्या होता है. Whosoever is the aggressor, जो भी आगे बढ़ेगा उसके नाम पर front होता है. This is easy. Okay. If an air mass is fully lifted above the land surface, out of the three, okay. ये पाकिस्तान आर्मी और ये पाकिस्तान ऑपोजिशन और ये इमरान खान. Do we get that? इमरान खान का कल हो गया ऑक्लूजन. ट्रू और नॉट? तो सिंपल बता रहा हूं. व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मींस वार्म एयर मूविंग, कोल्ड एयर मूविंग, दैट्स ओके, बट व्हेन एन एयर मास, इंटरवीनिंग एयर मास इज लिफ्टेड अप, उसकी कोई जगह नहीं रह गई उधर, तो उसके साथ ये हो जाता है. इट इज कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट. द फ्रंट अकर्स इन द मिडिल लैटिट्यूड्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर. अब ये जो है ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज को अननेसेसरीली वो किया. सर इज इट ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ वाटर एयर? पहली बात तो ये कह रहे हैं, दे आर जस्ट सेइंग दैट इट इज 0, 30, 60 and 90. So NCERT, after telling you three types of fronts, cold front, warm front and occluded front, they are telling you the address of the front. The front occurs in the middle latitude. तो ये बैटल जोन है. इतना सा उन्होंने बताया कि this is generally where fronts occur. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बात बताइए, this is uniformly warm, yes or no? And this is uniformly cold. Cold is associated with which pressure? High pressure. This is associated with low pressure. So you are here at 5 degree north and you start traveling in this air mass, ला 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 ला, इधर घूम रहा है तुम, उधर सर्दी में कपड़े पहन के पोलर बेयर के साथ एक पोलर बेयर घूम रहा है, ला 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 ला. सो व्हेन दे आर मूविंग, यस, हनीमूनिंग अराउंड, मोस्टली व्हाट इज द प्रेशर दे एनकाउंटर? वार्म वाले इसका लो ही रहेगा, लेकिन कोल्ड वाले का हाई रहेगा. बट नाउ थिंक ऑफ द बैटल ग्राउंड रीजन वेयर दिस इज कोल्ड एंड दिस इज वार्म, यस और नो? अब इधर आप जब घूम रहे हैं, व्हेन यू आर इन दीस ग्राउंड्स, व्हाट विल हैपन टू योर प्रेशर? विल इट चेंज अब्रप्टली और नॉट, डिपेंडिंग ऑन योर एयर मास? इधर हाई है, इधर लो है, एंड विल देयर बी अ ग्रेडियंट आल्सो? वहां तो मोरलेस सेम है, अनचेंज यूनिफॉर्म थिंग. तो वही एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि आपने फ्रंट्स देख ली. यू सीन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट. द फ्रंट अकर वेयर मिडिल एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर. वहां पर वार्म ही रहेगा, प्रेशर लो ही रहेगा. यहां पर कोल्ड ही रहेगा, यहां हाई ही रहेगा. बट यहां पर क्या है? दिस इज वार्म, दिस इज कोल्ड, दिस इज लो, दिस इज हाई. तो इसको वो ग्रेडियंट कह रहे हैं. इतनी सी बात कर रहे हैं. अब इसमें राइजिंग वाइजिंग की तो कोई बात ही नहीं है प्रियांशु. एनसीईआरटी इतना तो कॉम्प्लेक्स कर ही नहीं रही है. They bring abrupt change in temperature and cause the air to rise to form clouds. तो ये भी पता है आपको, मैकेनिकली राइज भी करेगा. So I think प्रियांशु सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस था, आपने इसको बेकार में टेक्निकल किया. एनसीईआरटी इतना टेक्निकल करने नहीं. So tell me everyone, we are living in India right in the middle of India. Any problem? No problem.
You are living in Pakistan, right in the middle of Pakistan, no problem. Where will be most of the activity? Most of the activity will be at the border. At the border, Pakistan trying to infiltrate, Indian forces retaliating. So that is what they are trying to say. This is a place where there is steep gradient of temperature and pressure. इतनी सी बात है, simple. There is nothing hidden in this. They have just told you very simple thing. किसी ने पूछा सर ऑक्लूजन बता दो, ऑक्लूजन मैंने आपको बता दिया. फिर भी आगे भी बताऊंगा. ऐसे नहीं कि वहां पे इमरान खान लिख के आए कि पाकिस्तान आर्मी एंड ऑपोजिशन ने मिलकर इमरान को ऊपर का रास्ता दिखा दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो ये हो गया. अच्छा, अब पूर्वी का एक सेंटेंस आया. पूर्वी का सेंटेंस पढ़ लेते हैं. क्या ये ऊपर स्क्रॉल होगा? बिल्कुल होगा. तो पूर्वी का ये कहना है कि सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या होता है. तो पहली बात तो इन्वर्जन क्या होता है. नॉर्मली व्हेन वी गो विद हाइट द टेंपरेचर शुड फॉल. तो पूर्वी का ये कहना है कि सब्सिडेंस तब होती है व्हेन अ वाइड स्प्रेड लेयर ऑफ एयर डिसेंड्स. ये ट्रोपोपॉज है एंड द एयर इज सिंकिंग. रिमेंबर दिस, एयर ऑन द टॉप इज कोल्ड बट व्हेन इट इज सिंकिंग इट बिकम्स वार्म. yes or no? So can I say temperature T1, T2, T3, T4, which one will be the highest temperature? So as we are coming down, the highest temperature is T4. ठीक है, perfect. So पूर्वी का ये कहना है the subsidence inversion develops when a widespread layer of air descends. अच्छा बताइए कौन से latitude में जनरली ये देखा जाता है? Where does the layer of air descend? So 30 degrees आपने बताया था subtropical high pressure. तो एड्रेस भी पता चल गया आपको. The layer is compressed. अब जो air which is coming down, it is compressed and it is heated. So we know rising air expands and cooled, sinking air compresses and heated. So that's also okay. Adiabatic process चल रहा है by resulting in increase in atmospheric pressure. And as a result, the lapse rate of the temperature is reduced. अब reduced तो पूछ ही नहीं रहे. We are not asking about reduced. So इसमें temperature inversion कहाँ हो रहा है? अभी तो यहाँ पर ये cold है और ये warm है. Can see this phenomena in mild and mid and high latitude. तो पूर्वी यहाँ तो inversion हुआ ही नहीं. Everyone is this temperature inversion or normal lapse. ये तो normal lapse है. इसीलिए तब से कह रहा हूँ. The day I told the class that there are 5 types of inversions and I said you will face challenge only in subsidence inversion, I requested all of you to read it. वो कोई नहीं पढ़ रहा है. Yes or no? वो कोई भी नहीं पढ़ रहा है. तो सब लोग हाँ आ गया. प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल भी सब्सिडेंस है यहाँ तक, ठीक है. नाउ कम्स द कैच. उसको अगर थोड़ा और पढ़ा जाए तो ये कहता है कि अगर नीचे कोल्ड एयर है, ऑलरेडी कोल्ड एयर है, so this warm air will not subside till the bottom and it will spread here itself. So now if I compare A with B, what happens with altitude? What is happening to the temperature? It is increasing. तब inversion होता है. This is called subsidence inversion. यही रिक्वेस्ट था कि इसको जाके पढ़ेंगे तो you will get to know. अगर ये बॉटम तक आया, if it comes down to the ground surface, that is not inversion, it's only warm air coming. But invariably it so happens कि नीचे की एयर भी तो है ना. नीचे की एयर, if it is relatively cooler, already cool, then the warm air cannot displace the cold air. Remember, warm air is lighter, तो ऊपर आकर वहीं पे स्प्रेड करने लगेगी. It will start spreading on top of that only. But you are in A1. If you look at the thermometer going from A to B, you will find that the temperature instead of decreasing is increasing. This is the 5th type of inversion which may happen in areas of subsidence. And I am saying may happen. अगर नीचे तक आया तो नहीं होगा. क्लियर हो गया? पूर्वी कहने सर पढ़ा तो था, अब मुझे समझ में आ गया व्हाट इज रॉन्ग. बिल्कुल ठीक है पूर्वी, तो आपने आधा पढ़ा, आपको लगा नीचे जा रहा है, बट यू डिड नॉट एक्चुअली राइट इट डाउन T1, T2, T3. तो इस वजह से हो गया. सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक? क्लियर? तो आज की क्लास शुरू करते हैं. We've taken 10 minutes in this discussion. Your doubts were taken and your doubts whenever you have in advanced climatology. And as it is, you know, my way of working is पहले आपसे डाउट ले लिए जाए ताकि this gives me confidence that my students are reading. है ना, पढ़ रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट नहीं आता. उसके बाद एग्जाम देने के बाद कहते हैं अरे मुझे यूपीएससी पे डाउट है, मुझे फेल कर दिया. तो रिक्वेस्ट है एडवांस क्लाइमेटोलॉजी के लिए अपनी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी का लेक्चर रिवाइज करें. कल हमने एयर मास और फ्रंटोजेनेसिस कर लिया, ठीक है. आज साइक्लोन करेंगे और जेट स्ट्रीम करेंगे. जैसा कि मैंने कहा, मानसून को मैं कहां पर करने वाला हूं. मानसून को आई विल टेक इट इन इंडियन ज्योग्राफी लेटर ऑन, ठीक है. और रही बात क्लाइमेट चेंज की, वो कल से क्लाइमेट चेंज नहीं सॉरी कॉपन वाला काम कल से शुरू हो जाएगा, कॉपन क्लासिफिकेशन. तो क्या करें आज? एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, मजा आएगा आप लोगों को भी. यू विल रियली लव इट. दैट सो देयर इज अ किड कार्ट रेस गोइंग ऑन. किड कार्ट रेस गोइंग ऑन, ठीक है. सर ये क्या होता है? अबे बच्चों की टॉय कार की रेस क्या होता है? ये बच्चा बैठा है, ठीक है, रेस चल रही है एंड दिस चाइल्ड इज फिजिकली हैंडीकैप्ड. द रेस बिगिंस. ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, बेचारा चला ही नहीं पा रहा, फिजिकली हैंडीकैप्ड. His morale is about to go down. True or not? The organizers don't want that to happen. The organizers don't want that to happen. Okay? So they know that the cars have a battery also. One is you pedal it and you do it. They know all cars have battery also. तो organizer remote control से इस कार की बैटरी ऑन कर देता है. This car wins.
गुड मैसेज बैड मैसेज, किसी को पता नहीं चला है। सोनिया बोले नॉट फेयर, नॉट फेयर सर, ये तो बहुत गलत बात है। ओके वाई सर, ये धोखा है सर, बहुत गलत धोखा है। ट्रू, बट यार हैंडीकैप चाइल्ड उसका मोरल बढ़ाने के लिए नहीं सर इक्विटी तोड़ी गई एंड ऑल दैट, ये गलत बात है। अनफेयर अनफेयर अनफेयर, नहीं है दैट एवरीवन, this is atmosphere, this is atmosphere and the air is moving like this. Why does the air move? तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, तो यानी यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर हो। But it has been seen that at some places very very swift flow of air happens embedded within the normal airflow. In the upper atmosphere ऐसा पाया गया कि normally the air is flowing from high to low, but in that sudden narrow streams of air with very high velocity 150 kilometers per hour तक जा रहा है और ये यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। who switched on the battery? Do you understand? Fair unfair मुझे नहीं पता है, but as you people are saying unfair unfair, when the meteorologists found such things in the atmosphere, for them this was unexplained. Yes or no? How is it that the air became stronger? तो आज हम क्या बात करने वाले? जेट स्ट्रीम्स की बात करने वाले। व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स आर अपर एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो। इसको हटा दें, बच्चों को हटा दें, सभी हट गया। अब चलो, अब घट ही गया तो प्लीज हटाओ। जेट स्ट्रीम्स आर अपर एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो। जेट स्ट्रीम्स आर अपर atmospheric air flow. By nature, they are near geostrophic. By nature, they are near geostrophic, near geostrophic, near tropopause. They are near geostrophic, near tropopause, narrow, swift, meandering, narrow, swift, meandering jets or airflow. Jets or airflow circumscribing the poles. Circumscribing the poles. They lie embedded in the upper atmospheric westerly airflow. They lie embedded in the upper atmospheric westerly airflow. Thus, the general direction of flow is west to east. The general direction of flow is west to east. These narrow cylindrical airflow bands lie at altitudes 8 to 10 kilometers या 6 to 8 करो या 6 to 10 kilometers and are 2 to 3 kilometers deep, 15 to 150 kilometers wide. 2 to 3 kilometers deep, 15 to 150 kilometers wide. Wind speed can go up to 200 kilometers per hour. 200 kilometers per hour. They are stronger and swifter in winters. Stronger and swifter in winters. So Avinash has a doubt, sir 23 के लिए बैच कब शुरू होगा? So Avinash 23 के लिए बैच है, ये 23 के लिए है बच्चे। अभी पेपर 1 शुरू हुआ है, इसके बाद प्रीलिम्स के बाद पेपर 2 शुरू होगा। People who clear 22 का प्रीलिम्स, they can also use this batch. So, उनको भी ध्यान में रखिए, but this batch is for 2023. ताकि तसल्ली से आप जॉब भी करें, आंसर राइटिंग भी करें, समझे भी आज के डाउट्स। यहाँ तक समझ में आया? सर समझ में तो कुछ नहीं आया सर, लिख लिया हमने, चलो ठीक है, समझा भी देंगे।
टॉप व्यू, व्हाट इज दिस? अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर से देख रहा हूँ, आई एम सीइंग फ्रॉम अ सैटेलाइट. व्हाट इज दिस? वेस्ट टू ईस्ट, जनरल एयर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर के एयर फ्लो में दे लाई एम्बेडेड, दे लाई एम्बेडेड मतलब इसी में छुपे हुए हैं. नैरो है, कैन यू सी दीज आर नैरो, दीज आर मियांडरिंग. मियांडरिंग क्या होता है? zigzag, and these are strong wings. ठीक है, कहां पर होते हैं? अगर मैं ऐसे साइड व्यू देखूं, आप इधर हैं और मैं साइड व्यू देख रहा हूं, तो ये एक पाइप की तरह है. स्ट्रॉन्ग जेट, they are like a pipe and the air is moving like that in the upper atmosphere. Do we get that? तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है इनमें. अपर एटमॉस्फेयर तो चल ही रहा है, अपर एटमॉस्फेयर फ्लो इज देयर, विद इन दैट दे आर स्ट्रॉन्ग जेट. और इनकी डेप्थ कितनी हो सकती है? 2 to 3 किलोमीटर, 2 to 3 किलोमीटर. और विड्थ भी बहुत ज्यादा है. यस, एंड एट व्हाट हाइट? 6 to 10 किलोमीटर की हाइट पर जेट स्ट्रीम्स. एवरीवन ओके? ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. वन इज टेकन बाय एन एरोप्लेन ऑन द टॉप, स्ट्रेटोस्फीयर से खींचा है, और एक साइड से खींचा है. Obviously the question comes, कैसे फ्लो करती हैं, क्यों फ्लो करती हैं? We will be looking at that, and are they having any impact on us? हमारी तुम्हारी जिंदगी पर क्या इनका कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, उस पर भी हम बात करेंगे. So in both hemisphere west to east, बिल्कुल in both hemisphere west to east. Why meandering sir? अरे बेटा अनिर्बान, पहले तो पूछ why jet stream. meander तो बाद में भी हो जाएगा, पहले jet stream तो बना ले, why तो कर ले. लेकिन सर meander क्यों करा, तेज क्यों चला, ये बता दो अनिर्बान. You tell me why sudden increase in speed. why jet तो बता दो, meander भी बता दो. क्वेश्चन भी पूछो यार. तो you tell me why is it there, क्यों होती jet streams. प्रियांशु बोला नो ऑब्स्टेकल, तो तुम्हें लग रहा है यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, इधर ऑब्स्टेकल है, बाकी जगह पे ऑब्स्टेकल है क्या? अनिर्बान सर आई डोंट नो व्हाई देयर, तो फिर व्हाई meandering क्यों? थिंक अबाउट. कई बार क्वेश्चन भी तो वो डिपेंड करता है ना, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन भी तो सही पूछो. चलिए कुछ याद दिलाते हैं आपको. समथिंग लेट मी रिमाइंड यू, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. रिमेंबर दिस वाज इक्वेटर, साउथ अमेरिका इक्वेटर दिखाई दे रहा है. व्हाट काइंड ऑफ एयर इज दैट इक्वेटर एवरीवन? ऑब्स्टेकल है क्या? अनिर्बान सर आई डोंट नो व्हाई देयर, तो फिर व्हाई meandering क्यों? थिंक अबाउट. कई बार क्वेश्चन भी तो वो डिपेंड करता है ना, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन भी तो सही पूछो. चलिए कुछ याद दिलाते हैं आपको. समथिंग लेट मी रिमाइंड यू, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. रिमेंबर दिस वाज इक्वेटर, साउथ अमेरिका इक्वेटर दिखाई दे रहा है. व्हाट काइंड ऑफ एयर इज एट इक्वेटर एवरीवन? वार्म एयर. कैसे नो? दिस इज पोल, सो व्हाट इज द एयर एट पोल? सर कोल्ड. इज द एयर कंप्रेस्ड एट पोल? यस सर कंप्रेस्ड, ऑल द एयर इज कंप्रेस्ड. इतना सही होता है सर, 8 किलोमीटर्स. एंड इज द एयर एक्सपेंडेड एट इक्वेटर? यस सर, 8 to 18 kilometers. What is the top? Top is called tropopause, sir. Is everyone okay? तो ये क्या है? ये है ट्रोपोपॉज. पहले तो 3D डायग्राम समझ में आना चाहिए ना. ट्रोपोपॉज इज अ slanting line. Is everyone okay? Perfect. तो कैन आई से ऑन द ग्राउंड एवरेज प्रेशर कितना होता है? 1013 होता है ना, 1013, 1013. यहां पर कितना होगा? 1033 हो सकता है. ट्रू हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर. नाउ बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन व्हाट विल हैपन? एयर विल एक्सपैंड. सो एक्चुअली एयर मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप टू हायर ऑल्टीट्यूड. एयर मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप टू हायर. और इधर क्या है? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन
all the air is compressed at the bottom. So tell me, remember, pressure at any point is the weight of the air above it. So where is more air? X or Y? X or Y? So Y has more air. Why? Sir, because it has been, because of this, it has been pushed up. So air को ऊपर भेज दिया है, तो वहां पर more air है. But इधर क्या है सर? All the air, heavy air has gone down. So नीचे ज्यादा air है सर, ऊपर हो. अच्छा, because there is more air at the bottom, what pressure is at poles? High. And because most of the air at the equator is being sent up, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? Low. Is everyone okay? But will the opposite happen and on top or not? इधर high हो जाएगा और इधर low हो जाएगा. Is everyone okay? Do you understand? Whenever we have a low pressure at the bottom, ऊपर high हो जाता है. Is everyone okay? High का मतलब अगर मुझे आइसो बार्स से दिखाना हो, so it will be some 800 millibars here. नीचे 1000 millibar. Why कम क्यों हो रहा है? Remember, with altitude the pressure decreases. That's okay. 800, 700, 600, 500, 400, low, high. Is everyone okay? Upper atmosphere की बात कर रहा हूँ. Everyone true? Can you understand lower atmosphere, upper atmosphere, and the pressure values? So these values are for tropopause, the values which are written. Everyone with me? यहाँ पर low हो जाएगा because the air is going down. Where is the PGF, everyone? PGF is this. ठीक है? The air will have a tendency to go like this, but आपको पता है air धीरे धीरे क्या हो जाती है? क्या बन जाएगी? Which wind? Geostrophic wind. True? Who will balance what? So Coriolis force will balance PGF. Everyone, do you remember or not? So when I say upper atmospheric westerly flow, do you understand or not? So in the upper atmosphere, generally the airflow is westerly. Air कैसे जा रही है? Westerly. पहले तो westerly समझना है. Why? Geostrophic. Is everyone okay? True. So that is why we are talking about this. Now I want to ask you one thing. This is equator. This is equator. Normally the temperature at equator is 25 degrees Celsius. Yes, 25 to 30 degrees Celsius. What is normally the temperature at poles? Normally the temperature at poles? 0 या -10 ले लो. -10. है ना? Below 0 मैंने -10 ले लिया. Normally -10, -20 ले लो. -20. Okay. So what is the difference? What is the difference between them? Can I say 45 degrees Celsius is the difference between them? Now think of winters, everyone. Think of winters. Sun has gone in the southern hemisphere. Now the sun's heat is a little less. So equator पर अभी भी 25 ही होगा. पहले 25 to 30 था. अब probably 20 to 25 होगा. इतना ही होगा. But what will be the impact on the poles? 6 months of night. This will go to -80. Possible or not? -60, -80. What is the difference now? What is the difference now? 100. Tell me, if temperature difference decides the pressure difference, which season has a higher thermal and a pressure gradient? Sir, winters. Temperature contrast between poles and tropics increases during winters. There is this thing.
और ड्यूरिंग समर्स क्या होगा? आजकल तो हम देखते हैं यार, आपने देखा वो भी मेल्ट हो गया, साइबेरिया भी मेल्ट हो गया, साइबेरिया में हीट वेव हो गया, वहां 20 यहाँ 30 समर्स में, तो डिफरेंस कितना रह गया? ओनली 10 डिग्री। heard of that or not? So is everyone going to accept my law that the temperature gradient between the poles and the low latitude becomes very high during winters? The temperature contrast become very high during winters and less during summers. Is everyone okay? अगर आप मेरी बात मान रहे हैं, yesterday I told you about fronts. Which season will have stronger fronts? So winters will have stronger fronts. Definitely the warm front is warm and warmer air and colder air, so winter will have, because front is actually contrast na. The more the contrast, the more this thing. As I told you yesterday, we were talking about ITC, that we said that's not a very big contrast. Is everyone with me on this? Basics की बात कर. So can I say ये जो westerly flow है, ये जो gradient है, ये भी बदलेगा. So in winters these westerlies will also become strong. अब मुझे एक बात बताइए. Have you read in NCERT that westerlies are stronger in southern hemisphere than northern hemisphere? Yes. Does it say it is because southern hemisphere there are no obstructions? कम obstructions हैं, north में बहुत land है. One. Second, does it also say that because of the temperature contrast, winters westerlies are stronger than summers? ये भी समझ में आ गया. So दो चीजें आपको बताई हैं. Westerlies are stronger if there is no friction, and second is which season westerlies will be stronger? Because of temperature contrast, winter will be there. एक रूल दिमाग में कहीं पे बैठ गया. If you want, you can write also. बुक्स में भी लिखा. अब ऐसा हुआ. Everyone, how is the atmosphere flowing? West to east चल रहा है. चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्यों चल रहा है? So because it has become geostrophic. And west to east, if you are on a sphere, will you take a full chakkar or not? Can I say you are circumscribing the pole? So this is happening. So ideally you started your journey from equator. Remember, this was equator. You wanted to go like this, but you turned geostrophic. So upper atmospheric air is not going to the pole, it is geostrophic. Now the problem is that within that we have certain narrow bands of swift air flowing. यहाँ तक समझ में आ गया. यही मैंने डायग्राम बताया. 7 to 12 किलोमीटर, मैंने 6 to 10 लिखा है. लड़ना मत, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि डेप्थ भी तो 1 to 3 किलोमीटर है और विड्थ कितनी होती है? 100 to 500. इज एवरीवन ओके? ऐसे नैरो जेट्स ऊपर चल रहे हैं. दोस आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम. पहले तो मैंने आपको वेरी सिंपल थिंग, व्हाट इज अ जेट स्ट्रीम बताया, अभी व्हाट बताया है. इज एवरीवन क्लियर विद व्हाट? आर यू एबल टू विजुअलाइज इट? व्हाई एंड हाउ इज अ साइंस पार्ट ऑफ इट. लेट्स गो टू द व्हाई एंड हाउ आफ्टर दिस. दैट वाज अ टॉप व्यू. अगर मैं ये देखूं तो ये जो जेट स्ट्रीम्स है ना, ये जो बनी जो है, इट इज फाउंड दैट दिस वन इज क्रिएटेड अराउंड 60 डिग्रीज, दिस वन इज क्रिएटेड अराउंड 30 डिग्रीज, एंड जस्ट लाइक परमानेंट winds, these are permanent jet streams. The one which is created in the upper atmosphere around 30 degrees, can I say this is 30 degrees? 30 degrees के ऊपर जो बनता है, get that? That is called subtropical westerly jet. And the one which is created at 60 degrees, that is called polar jet. Is everyone okay? So ये 30 degrees है everyone, ये 90 degrees pole. Remember we have the PGF like this. What will happen? The air is turning geostrophic. ये तो सबको समझ में आ गया. This diagram also understood. This is the same thing. वही diagram को मैंने, this is the top view, this one is a side view. Is everyone okay? And whenever we draw in vector notation something like that, that means this is coming out of the screen on my face. I also want to show you the jet stream speed in summer. Speed is 60 km/h. Winter में speed is 125 km. I said it can go up to 200 km. Generally 125 is stronger. One is the speed changes with season. Everyone okay? Can you also see that the location changes with season? Can you see a southward shift of which jet stream? Polar front jet stream. ये कहाँ पर बनता है? 60 पर बनता है, बट ये नीचे आ गया कि नहीं? Remember this is 60 degree latitude. तो ये नीचे आ गया कि नहीं? कौन से सीजन में नीचे आया होगा? Which season it would have shifted down? Tell me. Winter. Winter it will be shifting more. Why? Because the pressure belt shift. Is everyone okay? Just like your pressure belts, just like your surface wind, upper atmospheric wind also shifts with the movement of sun. Is everyone okay? Can I say the entire atmosphere surface to top वो सारा shift करता है sun के साथ? यहाँ तक भी क्लियर हो गए सब लोग? और आगे तो ये बनी कैसे? How is it made? Perfect. So you are on a car and the car is running like this. Okay, on a straight road. And आप एक्सेलरेटर में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, and you turn the engine off. ठीक है? What will happen? The car will stop over here. True or not? The car will stop over here. Decelerate.
Suppose the car was on this slant like this, and you stop the engine. Where will the car stop? Either faster deceleration. True or not? And suppose the car was on a downslope, and you switch off. Where will the car stop? Maybe it will stop. Maybe it will continue. True or not? Can I say this is zero gradient? This is negative gradient, mean negative slope, upslope, and this is positive gradient. Yes or no? So ये car रुकेगी नहीं. This car will not stop. And if I say A and B, can I say super positive gradient? True or not? So in situation A and B, the car will not stop, but the velocity will be different. Yes or no? अब हम कार की बात नहीं कर रहे. We are talking about air. So do you know what drives air? Are you okay with a word called gradient driving it? Gradient drives air. All of you are saying PGF. Okay, PGF. So everyone, I want to ask you one thing. There are two tanks. One having water up to this level, one having water up to this level. When I connect them, what will happen? Water will flow from A to B till they reach what level? Same level. This is called pressure gradient force. Which pressure? Hydrostatic pressure. ऐसा सुना आपने हाइट की वजह से? True. अब मेरे पास I have a plane surface and I have some water over here. Plane surface. Will the water have a tendency to move anywhere? No. Why no? So because there is no gradient. कोई gradient ही नहीं है तो पानी वहीं पर रहेगा. True or not? Okay. Now I tilt this table a little bit. What will be the tendency of the water? अब क्या होगा? Say the tendency of the water is to flow down. What velocity? यहाँ तो zero tendency था. थोड़ा सा v से चल रहा है. Now I want to tell you that there is a depression in this table. ऐसा. Is everyone okay? Please pay attention. Table में थोड़ा सा depression है. So now when this water is flowing, everyone, when the water is flowing, when it reaches here, will it suddenly accelerate or not? बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ेगा. But the slope of the table has remained the same. Gradient has not changed. Overall gradient has not changed. No sir, it has changed sir. Local gradient यहाँ तो देखिए sir slope change हो गया ना. Locally तो बढ़ा ना sir. So can I say locally there can be sudden acceleration in speed if such things are there. Overall the slope of the table is like this only. We did not change it. But was there a local depression? Suddenly acceleration होगा या नहीं होगा? हो जाएगा. Perfect. So air mass 1. नहीं air mass 1 नहीं करते. सब लोग ध्यान देंगे अभी. This is ground surface. Here we have low pressure. Here we have high pressure. This is warm area, equator. So the air rises up. Yes. तो यहाँ तक air है. और यहाँ पर क्या हो गया? High pressure. And here the air tends to sink. तो यहाँ पर क्या हो गया? Low pressure. Is everyone okay? Cool. ये मैंने बता दिया सबको. Is everyone with me? Upper air, what is the slope? What is the slope? What is the tendency? The tendency is to flow like this. True or not? So what will be the tendency of this molecule 1? So molecule 1 will flow like this, in this direction. And where does it want to reach? It wants to reach here. Molecule P बनना चाहता है. True or not? Is everyone okay? Will it be able to reach it? No sir. In the process वो क्या हो जाएगा? वो टर्न कर जाएगा geostrophic. Let us forget that. Everyone knows कि geostrophic होगा. ये वहां तक पहुंच नहीं पाएगा. So can I say, since the high pressure is known 800 millibar, and since this is known as 600 millibar, yes. So what is the slope? 800 minus 600 by total distance. प्रियंक वो तो pressure difference है. Total difference ना तो slope तो यही है. What is the slope? This is the slope. So ये एक constant velocity पर आएगा कि नहीं आएगा? Will it move at a constant velocity called v? Is everyone okay? Perfect. But there is a problem. So what is the problem? This warm air exists as an air mass. Which air mass? Warm air mass. And this cold air exists as a cold air mass. Is everyone okay? True. Everyone with me on this or not? ये एक air mass है.
ये भी एक एयर मास. So the problem is when this fellow m1 is flowing by velocity v because the slope is this angle. Remember, this is the slope. Suddenly there is steep slope. Do you understand? दोनों एयर मास में कॉन्ट्रास्ट है. अभी एनसीईआरटी में पढ़ा है ना, ये एक्सपेक्टेड था. एक्सपेक्टेड वाज दिस स्लोप, बट एक्चुअल स्लोप इज this one. There is a sudden slope increase, sudden temperature change, high temperature to low temperature, sudden change happens. NCERT says no, frontal zone is the place where sudden transition of temperature and pressure will happen. तो जो अभी आपको बताया था, कहाँ गया टेबल? Suddenly will we experience velocity increasing? True or not? तो उसके बाद फिर वापस आ जाएगा. Everyone tell me the velocity will increase and then gradually क्या होगा, नाला जो है थोड़ा सा भर जाएगा. This will fill up or not? और उसके बाद it will again flow. It will flow at a normal v. इधर भी v था, इधर भी v था, but उस टाइम पे तो फास्ट हो गया नहीं because of that local one. Can you see there is a reason for sudden rise in the velocity, and this will be becoming v instead of छोटा v. Do you agree or not? Why? Because there is a serious contrast between temperature. So temperature की वजह से, जैसे हमने टेबल में डेंट बताया था, ऐसा हो गया. So this is not a pressure gradient, this is a thermal gradient. और एक स्पेशल विंड बनी, इसको बोलते हैं थर्मल ग्रेडियंट विंड. You have heard of pressure gradient wind, but at places because of temperature contrast, a slope is created, and that's a special one, thermal gradient wind. Is everyone okay? यहाँ तक क्लियर? फोटो में दिखाऊं? ये वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, कॉन्ट्रास्ट पे फ्रंट पे क्या हुआ? Suddenly a slope is created or not? Can you see extra slope? Otherwise the normal angle was this. Normal angle is this. Suddenly slope is created. Polar front, strongest PGF here. So पहले थर्मल आएगा, थर्मल से प्रेशर इंपैक्ट होगा, and a gradient is created. Sharp temperature contrast and horizontal pressure gradient force is created over here. Everyone okay or not? समझ तो सब आ रहा है, टेबल भी समझ में है. ऐसा होता है, इसलिए बता. I gave you a table example, you could understand. I'm saying it is happening in the upper atmosphere. ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोग? Everyone, do you remember this? ये सब याद है सबको? What is this? Upper atmospheric flow. Why is it flowing west to east? So because it has turned geostrophic. इसको कहाँ जाना था एक्चुअली? इसको जाना कहाँ पे था? इसको जाना तो इधर था, लेकिन ये सारे क्या हो गए? V. Is everyone okay? But the places where the wind instead of V has become capital V, if that becomes geostrophic, will that part be moving faster or not? Upper atmosphere की सारी wind geostrophic हो जाएगी. The wind will turn geostrophic. ये भी geostrophic, ये भी geostrophic, ये भी geostrophic, ये सब. और किस स्पीड पे चलने वाले हैं? They all will be moving at V. But when this one turns geostrophic, this will move at V. Can you understand why a narrow band will acquire a lot of speed compared to the relative? Pehla, simple understanding. The wind which was going from high pressure to low pressure will turn geostrophic. Simple. Slope is same, so all of them will turn into V. But at the place where two fronts are meeting, there is a sudden dip. That thermal gradient, temperature contrast, gives birth to a special type of pressure contrast, and because of that, winds are created. Acceleration of wind happens. True or not? Yes. That is why jet streams are created. Where are they created? Generally, a place where two fronts are meeting. Two air masses are meeting. Sorry, can I say front के ऊपर? अच्छा, कहाँ पर एयर मास मीट करते हैं? जल्दी से बता दो मुझे. 3 एयर मास बताए थे, कहाँ पर मीट करते हैं बता दो मुझे. 3 एयर मास का एड्रेस. सर, एक तो हेडली और फेरल मीट कर रहा है, और एक फेरल और पोलर मीट कर रहा है. यस सर, बट आपने कहा था फेरल तो बनता नहीं है. सेल नहीं बनता, एयर मास तो है. पूल एयर मास है या नहीं है? 3 एयर मास बनाए थे ना. 1 2 3. डिड वी मेक 3 एयर मासेस? अब बताओ, जेट स्ट्रीम पहले समझ आया कि नहीं? नॉर्मल आ रहा है वी सडनली स्पीड, फिर नॉर्मल आ रहा है वी फिर से स्पीड. डू वी गेट दैट? तो यहाँ पर जो सडनली जो मूव करेगा वो जेट स्ट्रीम बनेगा. इधर जो मूव करेगा वो भी एक जेट स्ट्रीम बनेगा. 2 जेट स्ट्रीम्स है. इधर भी ओके. यू समझ लो, atmosphere is not a flat table. Atmosphere is not a flat table. It has got many ups and downs. Ups and downs means in terms of pressure. So what will happen? The wind which should have gone at a constant speed or even turned geostrophic at a constant speed of v acquires at places capital V, at places capital V dash. So जहाँ पर भी acceleration होगा, local acceleration will lead to a narrow band of wind which is faster than the surrounding. And those, when they were discussed in the when they were discovered in the upper atmosphere, they were named as jet streams. Is the concept clear? Physics हटा दिया,
वेरी सिंपली आपको डायग्राम्स के साथ दिखा दिया, वहां पर आप क्या बनाएंगे, आपको सिर्फ एयर मास बनाना, ये बना दीजिएगा। एवरीवन क्लियर और नॉट? आई डोंट नो, कई लोग कहते हैं मुझे जेट स्ट्रीम समझ नहीं आता, ऐसे बनता है। Any reason which causes any air to suddenly accelerate, and if that air turns geostrophic, it will be moving at a different velocity compared to the remaining air of that area, and that faster air, that band of air, is called jet stream. Everyone okay? Why mostly in the upper atmosphere? Because remember, upper atmosphere, third force, frictional force is removed, so the chances of air becoming geostrophic is higher over there. समझ में आ गया? So that's also there. So will jet flow throughout the year? It will be weak jet, then happen in summer. Yes, we to said that. First of all, tell me, are the air masses there throughout the year? Yes, they are. Do the air masses shift north and south? Yes, they do. So their boundary will shift north and south? Yes. And what will decide the velocity of a jet stream? The temperature contrast. Bhai, ye jo gap hai, this will decide, no? Sudden acceleration. So this is T and this is T. If the temperature contrast is less, that means the jet stream is weak. If the temperature contrast is more, that means the jet stream is strong. Which season temperature contrast is higher? Which season is it higher? Winter. So in which season is jet stream stronger? Winter. समझ में आ गया या नहीं आया? यहाँ तक क्लियर? So jet stream topic complete because I have to go for my checkup. My in between नहीं जाना चाहती, खुशी जाना हो तो जाइए, क्योंकि अभी तो जेट स्ट्रीम के और भी बहुत सी चीजें समझनी बाकी हैं। अगर आपका कोई इमरजेंसी है प्लीज डू दैट। तो ऐसा नहीं है, अभी तो जेट स्ट्रीम व्हाट एंड व्हाई बताया है, उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो समझाने होंगे, मियांडरिंग भी तो समझानी होगी। नहीं समझाऊंगा तो वैसे आप मान सकते हो कि मैंने कह दिया मियांडर करता है। मियांडर क्यों करता है? देखो, आप जो है एनसीईआरटी पढ़ने को कहा, रात को आपको कहा 100 पेजेस पढ़ लेना, आफ्टर 10 पेजेस यू स्टार्ट मियांडरिंग। ये सुनो, क्यों करते हो? अच्छा, दिल तो बच्चा है जी, माइंड तो फ्रिवलस है जी, ये सुनो, तो इसलिए भाई हो जाता है। तो अभी जेट स्ट्रीम को क्यों मियांडर करती है? जेट स्ट्रीम का मतलब उसको मजा नहीं आता है, फील नहीं आ रही। अच्छा, एक बात बताएंगे, एवरीवन टेल मी वन थिंग। आई गिव यू अ स्टिक एंड आई गिव यू अ थ्रेड, एंड उस थ्रेड पर मैंने एक बॉल बांध दिया, स्टिक and the thread, and the ball is here, thread. Why is the ball hanging? Gravity. Yes. So if I place the stick like this, what will happen? The thread is here and the ball will stay like this. Is there any way that you can raise the level of the ball against gravity? So you start turning the stick, so क्या होगा? बॉल क्या हो जाएगी? Ball will rise up. ये धागा ऐसे खींच जाएगा, and the ball, and will the ball take turns or not? रोटेट करा है कभी आपने? एक स्टिक लीजिए, स्टिक पे धागा बांधिए और ऐसे कर दीजिए। एक्स्ट्रा फोर्स तो अप्लाइड नहीं है। Which force is stopping it from falling? Which force is stopping it from falling? Why is it not falling? The centripetal। क्या बात कर रहे हैं यार, सब कुछ गोल है, सारी साइंस का तेल निकाल रखा है भाई, कुछ भी बोलता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा सर्कस में होता है, मौत का कुआं, द वेल ऑफ डेथ। सो देयर इज दिस सर्कुलर वुडन, वो बना के रखते हैं, और उसमें एक गेट होता है, और गेट में मोटरसाइकिल चलती है, बाइक चला रहा है वो, कई बार कार भी चलाता है, ऑन द वॉल्स एंड दे डोंट फॉल। देखा आपने? Have you seen that? So bike is there, bike is on the walls, it doesn't fall, slant पे चल रही होती है। कार रेसिंग में भी देखा आपने, स्लांट पे चल जाती है। Why is it not falling? Because of centrifugal। जिन्होंने साइंस पढ़ा है, ये प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है? बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड्स को थोड़ा सा स्लांटिंग किया जाता है। इनको समझ आया, अच्छी बात है, वरना छोड़ो, कोई टेंशन नहीं। मैं तो याद दिला रहा था, स्कूल कौन सा तुमने दिल लगा के किया? Yes or no? So that is what we are talking about. Now everyone, ये थ्रेड है, this is the stick and this is the thread, this is the ball। हाँ बिल्कुल, राजेंद्र सही बोल रहा है, सभी फिजिक्स में पढ़ा था, बिल्कुल सब्जेक्ट तो आ गया भाई। So the ball will keep like this। क्या वेलोसिटी होगी इसकी? एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, suppose it is v। True। Now imagine, have you seen that sometimes when you're doing that, the ball starts twirling on this only, इसी पर हो जाएगा, इसी पर घूम जाएगी, उलझ जाएगी। And can you see when the ball is coming closer, it becomes faster। ऐसे चल रहा था तो it is going like this। A fan with big blades, वो ऐसे घूमता है, and a fan with small blades fast घूमता है। Yes or no? What principle of physics is that? Principle of, जल्दी बताओ। Principle of rotation, चरस। At any time the product of mass into velocity into radius will remain constant। तो अगर आपका ये बॉल आपने इधर ले आए, इतना ही रेडियस है, सपोज द बॉल, उसका धागा उसमें उलझ गया तो छोटा हो गया कि नहीं? सो द बॉल विल स्टिल रोटेट, यस, बट दिस न्यू रेडियस इज r/2। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v, बिकॉज मास तो सेम है। ट्रू और नॉट? ऐसे होता है।
तो आपने कई बार देखा होगा स्नो स्कीइंग में लड़की डांस कर रही थी बर्फ के ऊपर, व्हेन द हैंड्स आर आउट शी इज टर्निंग एंड व्हेन शी क्लोजेस हर हैंड शी टर्न्स वेरी फास्ट। देखा आपने? ओलंपिक में जो स्नो ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स होते हैं, उसमें स्कीइंग में वो डांस करके दिखाते हैं, व्हेन द हैंड्स आर स्प्रेड आउट शी इज टर्निंग लाइक दिस एंड व्हेन शी क्लोजेस द डांस शी बिकम्स वेरी फास्ट। तो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डू यू गेट दैट? सो अगर वेलोसिटी चेंज होगा, इफ द वेलोसिटी चेंज, व्हाट हैज टू चेंज? इफ द मास रिमेन्स कांस्टेंट, व्हिच वन हैज टू चेंज? Radius has to change. If the velocity is double, then radius has to go half. Is everyone okay? If the radius is double, then velocity has to go down. तो अगर हमने इसको डबल आर कर दिया, 2r कर दिया ना, तो बहुत स्लो घूमता दिखाई देगा। जैसे ये प्लैनेटरी मोशन में भी आपने पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ आल्सो से दैट द एंगल कवर्ड बाय ईच प्लैनेट इज कांस्टेंट। अब ये थोड़ी फिजिक्स है और सिंपल फिजिक्स है, स्कूल की फिजिक्स है, बट मेनी ऑफ यू स्कूलिंग भी तो कॉम्प्रोमाइज थी। यहाँ तक ठीक है? इतना समझ में आया एवरीवन? Please pay attention. This is equator. This is North America. This is Africa. This is Europe. ये अच्छा मैंने आपको मैप बनाना सिखा दिया, पहचान तो लेते हो। नए नए बच्चे जो मेरी क्लास देखने आते हैं ना, भाई पता नहीं क्या बना रहे हैं, उन्हें मेटावर्स लगता है। This is 60 degrees. This is 30 degrees. And what is this, everyone? This is a jet stream. Are you with me? Jet stream is formed in the mid latitude. Between which air? Sir, warm air on this side, cold air on this side. Is everyone okay? Air mass की boundary पे बन गई jet stream, बन गई या नहीं बन गई? Perfect. Tell me one more thing. What decides the velocity of jet stream? What decides the velocity of jet stream? Sir, the gradient. Gradient of what? Temperature contrast. Is everyone okay? एक और बात बताओ मुझे, everyone, can you see that if a jet stream is taking a chakkar of earth, does it have a radius also? If this is earth's axis, तो उसका radius होगा ना कुछ? Will it have a radius r? It is taking a chakkar of this. Is everyone okay? यहाँ तक बहुत सिंपल है, सब समझ में आ रहा है, जहाँ समझ में आया पूछ लें। और अगर jet stream ये है तो इसका भी एक radius होगा। Remember subtropical westerly jet, किसका radius ज्यादा होगा? सर इसका ज्यादा होगा। The one which is closer to equator, wider radius. The one which is closer to pole, less radius. Is everyone okay with this? So jet streams are moving west to east. Two of them. This is called subpolar jet stream. Polar front jet stream. This is called subtropical to westerly jet stream. चलेगा? 30 degrees पर है. Equator पर नहीं है, 30 degrees पर. ये 30 पर और ये 60. Is everyone with me? And you are very clear, sir. It is the temperature contrast that decides the velocity of jet stream, and the velocity of jet stream is v. Everyone okay or not? It is okay. But I want to remind you of one thing. That you took air mass this and this, okay, but don't you think that this is MP and this is CP? So when you cross over when you were in MP, okay, but when you cross over, is there a strong temperature change going to happen? And when you cross over from CP to MP, is a temperature change going to happen? Can I say at this point the velocity will change? At this point the velocity will no longer be v. Is everyone with me or not? So मेरे साथ, suppose the velocity increases. जब भी वो contrast change होता है ना, contrast में remember, because of contrast what happens? Velocity increases. So can I say velocity became capital V? Problem. What is the problem? V has changed to V. If velocity increases, then to maintain angular momentum, something has to decrease. What has to decrease? Sir, radius has to decrease. Yes or no? अब मुझे बताइए, रेडियस इज लेस ऑन विच साइड, टुवर्ड्स पोल और टुवर्ड्स इक्वेटर? सो रेडियस इज लेस टुवर्ड्स पोल, सो विल द meandering, will the jet stream be forced to bend towards pole? Yes or no? Will this be forced to bend towards pole? If for some reason the jet stream slows down, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है, वो कॉन्टिनेंट में ज्यादा था, अब कॉन्टिनेंट से ओशन में आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है ना। If the temperature contrast is reducing, so can I say V dash? So अगर temperature contrast is reducing, then it will bend where higher radius is there. It will bend here. हो जाएगा कि नहीं? इधर फिर से velocity बढ़ गया, तो क्या हुआ? So can I say the rise and fall of velocity will cause our jet stream, which was naturally a geostrophic one, to actually meander. Meandering समझ में आ गया? Why does it meander? To conserve
एंगुलर मोमेंटम. सो इंस्टेड ऑफ दिस जेट स्ट्रीम कैसे चलती है? दैट वाज द आइडियल पाथ, बट द रियल पाथ इज मीandering पाथ. समझ में आ गया? सिंपल. एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो आज लाइफ में समझ आया है, स्कूल में थोड़ी आया था. स्कूल में तो न्यूमेरिकल करना था, m बता दो, v बता दो, r बताओ, m1 v1 r1 is equal to m2 v2 r2 if you are a science student. Commerce and humanity student were lucky, they were not given this torture. अपने को तो न्यूमेरिकल आता था, वो भी कभी समझ नहीं आता. दैट्स व्हाई डर लगता था आईटी में m कौन निकालेगा, v कौन निकालेगा, r कौन निकालेगा. यू आर नॉट. चलो कह रहा पता नहीं कैसे 85 आ गया. बेटा बोर्ड में ना वो लोग मार्क्स देते हैं बिकॉज दे नो अगर बोर्ड में फेल हुआ तो ये पंखे पे लटकेगा. दे डोंट वांट पंखा एंड ऑल दोस कॉम्प्लेक्सिटीज. दे नंबर दे. एक बार आप अपने बोर्ड के नंबर देख के देते हो इतना तो किया था जितना दे रहा है. यस. कंपेयर योर बोर्ड स्कोर विद द प्री बोर्ड स्कोर. प्री बोर्ड में कसाई एकदम कठोर. अरे मैम इतना किया था, कुछ तो दे दो. नालायक. पूरा सही नहीं. अरे स्टेप्स का दे दो, डायग्राम का दे दो, कम से कम रेड लाइन तो क्रॉस करवा दो. पिताजी को क्या जवाब दूंगा, फेल हो रहा हूँ, बोर्ड के लिए अलाउ तो कर दो. सेम फेल हो, वो बेचारा स्ट्रगल करा, बोर्ड में जाकर खंबा गाड़ के आ गया. यस. अंग्रेजी बोल नहीं पाता है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100. अब एकदम मतलब अमेरिकन बन के घूम रहा है. ट्रू. बहुत मजे से आता है. समझ में आया कि नहीं आया? जेट स्ट्रीम. कोई कहना सर मैं कुछ सिली पूछूं, आई एम लिटिल कंफ्यूज. जितने भी लोग बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हो सब कुछ सिली पूछेंगे, पूछ लो, तो रोक तो सकता नहीं. जेंट्स इज सेइंग समटाइम चीटिंग इन एग्जाम. जेंट्स सर्वाइवल, सबके पास स्टंट थे. somehow we were surviving school days. सर हाउ टेम्परेचर contrast increases velocity. बेटा एक बात बताओ, you are on a road where there is a gadda like this and you are on a road where there is a gadda like this. Where do you think will you experience more acceleration? Amit, if your temperature is T and T and यहाँ पे दोनों ही TT है, TT dash, तो वही तो बताया था अभी समर विंटर में. Greater contrast means greater thermal gradient. Greater thermal gradient means greater thermal winds. Do you get the answer, Amit? सर सब लोग सोचते हैं कि बच्चे ने बोर्ड के लिए मेहनत की, करना चाहिए. इवन द अडल्ट से मेरे बच्चे का तो बोर्ड है, क्यों तुम एग्जाम देने जाओ, बच्चा देने जाएगा, क्यों उसके सिर पे चढ़े हुए पूरे दिन. सर वेस्टर्लीज आर फॉर्म ड्यू टू जियोस्ट्रोफिक नॉट एबल टू रिकॉल. तो ठीक है जाके देख लो, उसमें क्या दिक्कत है. पूर्वी कह रही नॉट एबल टू रिकॉल दैट वेस्टर्लीज आर फॉर्म ड्यू टू जियोस्ट्रोफिक. पूर्वी मैंने तो बनाया आप लोगों के लिए पहले, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास ये मैंने बनाया. आपका तो सिली डाउट है, मैंने तो क्लास स्टार्ट करने से पहले रिवाइज किया पूरा का पूरा. आई मेड जियोस्ट्रोफिक विंड. एंड व्हेन आई से वेस्टर्ली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्टर्लीज ऑन द सरफेस, उसकी बात नहीं हो रही है. ये कौन सी है? अपर एटमॉस्फेयर वेस्टर्ली फ्लो. क्लास के स्टार्ट करने से पहले बताया. आप कह रहे हो मैं तो भूल गई, नॉट एबल टू रिकॉल. ये ऊपर के एटमॉस्फेयर में सब की स्पीड पे चल रहे हैं, वी की स्पीड पे चल रहे हैं. ठीक है. बट यहां पर क्या हुआ, इस एरिया में क्या हुआ, एक लोकल थर्मल ग्रेडियंट बन गया. सो सडनली द विंड व्हिच वाज हियर इट एक्वायर्ड हाई स्पीड एंड व्हेन दैट हाई स्पीड विंड टर्न्स जियोस्ट्रोपिक, वो जो एक बैंड बना, दैट बैंड इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ v. दैट इज कॉल्ड अ जेट स्ट्रीम एंड दैट बैंड डज नॉट गो सीधा, दैट बैंड गोज meandering. वो भी बता दिया क्यों करता है. यहां तक सभी बालक मेरे साथ हैं या नहीं है? पूर्वी आपका सिली और बिली क्वेश्चन सॉल्व हो गया. So if it is the air mass doesn't change for a greater distance, so no meandering. Himansha, we said jet stream is nowhere inside the air mass, only at the boundary. तो आप air mass से क्यों confuse हो रहे हो? If the air mass doesn't change for a greater distance, air mass में तो वही नहीं रहा. Where is the jet stream? Jet stream तो उसी transition area में. And this is what NCERT says. NCERT लगाया ना किसी ने? NCERT आपने कहा सर air mass doesn't change, तो उसमें jet stream नहीं होगा. बिल्कुल सही कह रहे हो. बट वो तो ये कह ही रहा है ना. Front, sucker in middle, and these are the areas where there is steep gradient of temperature and pressure. तो फ्रंट है ना, फ्रंट होता क्या, दो एयर मास की बाउंड्री. तो वहां तो उसकी तो नेचर ही चेंज वाली है ना. सो जेट स्ट्रीम इज नॉट क्रिएटेड इन द मिडिल ऑफ अ एयर मास. तो आप बोलो एयर मास अगर सेम रहेगा, वहां तो हो ही नहीं रहा ना, सिर्फ ड्रामा वाली जगह पर हो रहा है. डू यू गेट दैट? अब इससे ज्यादा करूंगा तो फिर आप जो समझ भी आया ना तो एकदम से यार मुझे कैसे समझ आ गया. हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? आई थॉट जेट स्ट्रीम इज टू टेक्निकल. व्हेन आई रेड इट फ्रॉम द बुक, व्हेन आई रेड इट फ्रॉम द YouTube वीडियो, दैट वाज टू डिफिकल्ट. यार समझ आ, कुछ कैच है, देयर मस्ट बी सम कैच. माय ब्रेन इज कैचिंग द सिग्नल. हो जाता है. दिस इज कॉल्ड आयनोस्फीयर रिफ्लेक्शन. Say there is temporary temperature contrast, is there a chance of temporary jet stream? तो सैयद ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. Very good सैयद. So there are two types of jet stream. One is permanent, one is temporary. So if we have these two air masses, remember 3 air masses will be there. So subtropical westerly jet and polar front will always be there. But can we have छोटू areas where we have two warm seasonal? ऐसा बन गया कुछ, बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर सीजनल बनेगा तो वहां पर एयर जियोस्ट्रोपिक होकर फिर से वहां पर कैन इट क्रिएट अ जेट स्ट्रीम. बट मे बी आफ्टर सम टाइम ये कॉन्ट्रास्ट ही खत्म हो गया. तो रिमेंबर दैट फेमस लर्निंग लेसन्स फ्रॉम शोले, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक वीरों की सांसें चलेंगी.
द ग्रेट गब्बर सिंह, आई थिंक मीटरोलॉजिस्ट ऑफ आप, जब तक टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है तब तक जेट स्ट्रीम है. एज लॉन्ग एज यू हैव द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट दैट इज देयर, इफ दैट इज लॉस्ट बाय बाय, फिनिश स्टोरी फिनिश. जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है क्लास देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन खत्म खत्म. एवरीवन ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? समझ में आ गया जेट स्ट्रीम? अब ये दिखा रहा हूँ ऊपर से कैसा दिखता है. पोल पे जाके अगर फोटो खींचा जाए तो ये दिखाई देगा कि नहीं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है. कौन सा वाला पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम दिखाई दे रहा है. और इसके सेंटर पे कौन सी हवा, ये कौन सी एयर को ट्रैप करता है? कोल्ड एयर को ट्रैप करता है. यस, इसी को तो पोलर वोर्टेक्स भी कहते हैं. ट्रू, एवरीवन ओके, पोलर वोर्टेक्स. और ये कौन सी है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. ये कौन से लैटिट्यूड पर आ रही है? 30 डिग्रीज पर है. रिमेंबर 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास. और 60 डिग्रीज के आसपास कौन सी है? पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम. डू वी गेट दैट? 30 60 ऐसे भी दिखा सकते हो. हाउ डू दे इंपैक्ट? जो वेल दे आर फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट. एवरीवन, आर दे फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट? देखो लैंड पे सीधा जा रहा है, लैंड पे मजे से जा रहा है. थोड़ा चेंज आने लगता है तो बेंड करता है, फिर सीधा जा रहा है फिर बेंड करेगा. कैन यू सी मोर और लेस स्ट्रेट, फिर बेंड करेगा. सो इट कैन ब्रिंग साइक्लोन्स टू इंडिया. आपने सुना है? तो ये जेट स्ट्रीम से इंडिया के मॉनसून में बताऊंगा. दिस इज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट. और यहाँ पर आ गया हिमालयस. व्हाट विल इट कॉज द जेट स्ट्रीम टू डू? जेट स्ट्रीम विल गेट बाइफरकेटेड. दिस आई विल टीच यू इन इंडियन ज्योग्राफी जस्ट टू टेल यू कुछ एग्जांपल. ये देखो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आता है. कैन दे बी इंपैक्टेड बाय लोकल फीचर्स? ओ यस दे कैन बी, प्रोवाइडेड दे आर हाई इनफ. कैन यू सी इंडिया इज हाई इनफ, so the jet stream can get bifurcated also. Now tell me everyone, when the jet stream, एक बात बताइए मुझे everyone, please pay attention everyone, please pay attention. Have we gone to higher latitude because of this bifurcation? Do you know in higher latitude the radius is less? And do you know as I go equatorward branch the radius is high, so one of them will speed up, one of them will speed down because of angular momentum conservation. It is not just that their speed changes or the temperature contrast changes, that is why speed will change. Even if their location changes, even if their location changes, that will be there. So do they play any role in recent heat wave phenomena? Well, they do play a role in driving the what should I say, the temperate cyclones. Okay? They do play role in bringing some areas heat waves in the cold areas and cool waves in the warm areas. ठीक है, वो कैसे होता है वो भी बताते हैं. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? प्लीज एवरीवन ओके. सब डायग्राम में भी बनाया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आगे बढ़ते हैं. So normally the waves go like this. In general, the upper air westerlies, polar jet, smooth होता है. At times it bends into long waves. Long waves. So a Swedish meteorologist Carl Rosby was studying them. So jet streams are also called Rosby waves. तो जो jet stream सीधा है वो तो सीधा है. But when it turns into waves like this, सर wave कैसे है? अरे crest trough. समुद्र में सोचो ना, लहर टाइप. So then it is called Rosby waves. Rosby waves result when cold air pushing into the lower latitude while warm air into higher latitude. Eventually, the upper air oscillation becomes so strong that the tongues of displaced air are cut off, forming upper air cell. अब ये पढ़ोगे आप किताब में, मेड सिंपल में. सर ये इनकी जीव कहाँ होती है? How can we cut the tongue? So I read in Ramayan, लक्ष्मण जी cut the nose of Surpanakha. Tongue तो उधर भी नहीं काटा था. Yes. Sir, I hear that there is some issue with the speech of Bruce Willis. न्यूज में आया था सर. Is very sad sir. अब कुछ भी डाई हार्ड नहीं होगा लाइफ में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. सर आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क दिस? फिर सेंटेंस लिख देंगे. सर ये किसकी टंग है? आपने तो बताया इनका टंग. सर ये नहीं समझ आया, कोल्ड पोलर एयर और लोअर लैटिट्यूड. तो ऐसा कभी भी लिखा हो, प्लीज स्टॉप रीडिंग इट, गो टू द नेक्स्ट पेज, यू विल फाइंड डायग्राम्स. समझ में आया? कीप द डायग्राम विद यू एंड देन रीड, समझ आ जाएगा. सो नॉर्मली हाउ इज द जेट स्ट्रीम गोइंग? जल्दी से बताइए. वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एंड ऑलमोस्ट सीधा पाथ. थोड़ा सा meandering किया, बट सीधा पाथ है या नहीं? In order to conserve angular momentum, because can you see it is crossing something जैसे ही हुआ. So when it crosses, will it go towards the pole? When the temperature contrast is low, it will go towards equator. When the temperature contrast increases, again go towards pole. Within the ocean, नीचे at the change ऐसा हो जाएगा कि नहीं? meandering हो गया. Yes. Is everyone okay? हाँ या ना? जल्दी से बताइए. ये आपका होंठ है और उसमें ये आपकी जीभ है. Is it a tongue? Can you see this is the tongue of cold air? जिन लोगों को टंग नहीं समझ में आ रहा है, सर वो मियांडर कट जाता है ऑक्स बोले. पहले इतना पढ़ ले, पहले टंग समझ में आया कि नहीं आया? आधे लोग सर टंग नहीं समझ में आता है, उसके बाद लगा भी देगा सर बिल्कुल कुछ समझ. सो नॉर्मली व्हाट दे आर सेइंग इज वेव इज देयर एंड वेव इज मियांडरिंग. यू टेल मी, हैज an area of warm been pushed up? Yes or no? And a cold area has been pushed here or not? Do we get that? अच्छा एक बात बताइए मुझे everyone, this is region X. Don't you think because of the tongue
द प्रेशर इज इंक्रीजिंग हियर, कंप्रेस हो रहा है, बल्कि यहाँ तो खैर खुल रहा है, इधर ज्यादा एक्चुअली दिस वन इज ट्राइंग टू एंटर, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, इधर तो एक्चुअली एक्सपैंड हुआ दिस एयर, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस कोल्ड एयर इज गेटिंग दैट एक्स्ट्रा एयर, सो विल इट एक्सपैंड और नॉट, इट इज गेटिंग दिस, बट दिस हॉट एयर इज बीइंग प्रेस्ड बिटवीन टू कोल्ड, सो यहाँ पर लो यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड इज लो प्रेशर एंड यहाँ कंप्रेस हो रहा है, विल दिस बी हाई प्रेशर और नॉट, इज एवरीवन ओके? The warm air is now being squeezed by the cold air, remember? And here the cold air gets more area to expand, cold area is expanding, remember? Who can be squeezed? Cold air can be squeezed or warm air can be squeezed? Warm air can be squeezed, no? अरे cold तो squeeze करता है, कल तो बताया था, squeeze means it can be pushed away, do we get that? Is everyone okay? Will the meandering stop or increase? It will increase. Next step, the tongue, ये देखो और हो गया, और ये देखो जो warm air है, is it trapped between two lumps of cold air? Yes or no? यहीं पे occlusion हो जाएगा अगर ये दोनों मिल गए तो, possible? So now a jet stream which originally was flowing like this, can you see it has meandered? It has meandered or not? True? And remember बहुत ज्यादा meander होगा तो क्या करेगा jet stream देगा बाद में क्या, I'm going straight again, and this extra वाला oxbow lake की तरह क्या करेगा, उसको छोड़ देगा. True? Which latitude is this? Mid latitude. This is mid latitude. Yes or no? Will generally we are expecting it to be cool, but ये क्या हो गया, cold. Why cold? Because of that. So somebody asked me, can jet streams create heat waves? I am saying first jet stream is creating a cold wave. Possible or not? True or not? Everyone with me on this? ये सच में होता है क्या, देख लेते हैं. Normally what is this? Pacific Ocean, North America, सीधा होना चाहिए था, but what is happening? Temperature change, yes or no? Will the velocity increase? Velocity increases, radius less, does it bend northward? True or not? हो रहा है, ठीक है. कहाँ कंप्रेशन हो रहा है, ये एरिया कंप्रेस हो रहा है, ये एरिया एक्सपैंड हो रहा है. ट्रू? विद टाइम और ज्यादा हो जाएगा, पहले यहाँ पे था, सोचो ये फिर से बना रहा हूँ मैं, एवरीवन, दिस वाज द ओरिजिनल वन, दिस वाज द ओरिजिनल वन, एवरीवन. नाउ दैट एक्स्ट्रा वन गोज उधर and the original one is restored. Everyone tell me what is this? Canada. And what air is this? Warm air. Canada में क्या हो गया, heat wave. और Texas में क्या हो गया, cold. Who did it? Jet stream. And I also want to tell you everyone, can I call this as a tongue? Can I call this as a tongue? Warm tongue goes up, cold tongue towards the equator. And then what happens? The tongue is cut off. Warm goes over here, cold comes here. Everyone, I don't know whether you realized or not, all air circulation is for this only. What has happened? Global heat exchange. Has it happened or not? Heat wave आ गया. Development, first, why a straight one will turn into this development and why it will come back to straight. Dissipation of Rossby waves. पहले क्या होता है, fairly smooth flow. Second, Rossby waves form with a ridge of warm air extending into Canada and trough of, remember, crest and trough of cold air into Texas. तो इधर क्या है, Texas, इधर Canada. Third stage, the trough and the ridge, ऊपर और नीचे वाला, may begin to turn back on themselves. The trough and ridge are cut off and eventually dissipate. वो वहाँ पर heat ले गया, cold ले गया. Do we get the answer now? Can jet stream cause heat waves? Can they cause heat waves? True. I also want to tell you one more thing. This jet stream is formed where? On the polar front, no? Polar front is between which air? Warm, tropical air and cool. कल हमने देखा था वहीं पर तो cyclone बनता है, occlusion happens. Can I say the temperate cyclone lies at the bottom of jet stream? Everyone with me? So please repeat how high and low. High and low की तुम चिंता मत करो, तुम पहले warm और cold air समझ लो. High और low तो upper atmosphere में ना. High or low is because of squeezing and expansion. That is because at a place air is squeezed and at a place it is getting more air to expand. Is everyone with me on this? यहाँ तक clear? अब वापस जाता हूँ. When I have looked at so many figures, let me read it now and you tell me do you understand this or not and can you write this in the exam. At times, however, the upper air westerlies develop oscillation, long waves, and those waves are called Rossby waves. They result when the cold polar air pushes into lower latitude and the warm into higher latitude. Warm का ridge बन गया, इसका trough बन गया. Eventually, upper air oscillation becomes so extreme that the tongue, ऊपर और नीचे का tongue, they are cut off, forming air cells of warm and cold air.
दिस प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेट पोलवर्ड एनर्जी ऑफ फ्लो। चलिए पोलवर्ड एनर्जी कैसे कह रहे हैं, नेट इक्वेटर में भी तो है, अबे हीट इज एनर्जी नो, सो पोल की तरफ हीट गई कि नहीं गई, सो नेट एनर्जी, पोल में ही तो डेफिसिट था, सो हीट इज गोइंग देयर, सो नेट पोलवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम इक्वेटोरियल, द सेल्स इवेंचुअली डिसअपियर, तो वो जो वहां पर जो पहुंचा है वो हवा भी तो वहां को कूल कर देगी और इधर हीट कर देगी, एंड पैटर्न विल रिटर्न टू नॉर्मल। सर कितना टाइम लगता है इसमें, फॉर दिस होल साइकिल टू टेक प्लेस इट जनरली टेक्स 4 to 8 वीक्स। इस साइकिल को क्या कहा जाता है, इंडेक्स साइकिल। इंडेक्स साइकिल कैसे बनानी है, अगर एग्जाम में बनानी हो ऐसे बनानी है, जो तो सेमी सर्कल है, हाँ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे बनानी है, 1 2 3 4, ओके। इजी और डिफिकल्ट, पीपल से सर ये बनाने में बहुत टाइम लगा, मैंने ऐसे ही बना दिया, ये तो दिखाने के लिए था तुम्हारे लिए। दिस इज इंडेक्स साइकिल, वी स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रेट, इधर क्या था कोल्ड, इधर क्या था वार्म, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, वार्म के 2 पॉकेट ऊपर चले गए और कोल्ड का एक 2 पॉकेट नीचे आ गया, एंड द जेट स्ट्रीम इज अगेन स्ट्रेट। सर यहाँ पर तो एक ही आया, आपके 2 आ रहे हैं, मेरी मर्जी, मैंने ज्यादा एरिया दिखाया यार, देखो काउंट करके बैठ जाता है कुछ लोग। इज एवरीवन ओके, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? So warm air is going polewards, cold air is coming equatorward, jet streams also do that only। इस पूरी साइकिल को इंडेक्स साइकिल कहते हैं। इंडेक्स साइकिल 4 to 8 वीक्स होती है, कभी कभी ये लंबी हो जाती है, इफ इट गेट्स प्रोलॉन्ग्ड, इफ इट गेट्स प्रोलॉन्ग्ड तो कैन आई से, वो एक बात बताइए मुझे एवरीवन, इफ दिस गेट्स प्रोलॉन्ग्ड, तो एक बार टेक्सास में एकदम बर्फ जमी हुई थी, इवन इन समर्स इट वाज फ्रोजन, पीपल वर वंडरिंग क्या हो रहा है यार, ये सुनो, एंड द कोल्ड रीजन्स वर हैविंग हीट वेव, और वो चेंज ही नहीं हो पा रहा है, as long as the meander does not cancel out and it stays like this, can you see abnormal heating and cooling will be there। So if we see Russian, in Ukrainian Russian region, sometimes heat wave is there, so Met department says well because of abnormal meandering and no change in that, वो index cycle change ही नहीं हो रहा है, वैसे अटक गया है, so the heat wave will continue। So why does it get stuck? अरे नदी की मर्जी है ना, remember river is going meandering, one day it will cut, it will depend upon total number of sediments and all those things, similarly it will depend upon the temperature gradients and everything, true or not? अच्छा बट आप तो टीचर हो ना सर, आप तो सब कुछ बताओगे एग्जैक्ट, यू शुड नो एवरीथिंग, तो ये मुझे साइंटिस्ट ने बताया, ऑल्दो इट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर व्हाई अपर एटमॉस्फेयर गोस इनटू दीस ऑसिलेशन, एडिशनल इनसाइट्स आर गेटिंग कमिंग, जैसे पता चलेगा बता देंगे, वरना आज तक देख लो बता देगा, एंड अर्नब तो नोज ऑल, ट्रू। कैन वी रीच कुछ चीजें अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, वी हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन हाउ इट इज हैपनिंग, व्हेन विल इट हैपन, कब होगा एग्जैक्टली, कब होगा, इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट, बट डिड वी अंडरस्टैंड जेट स्ट्रीम्स इन अ गुड वे, जेट स्ट्रीम क्या होता है, हीट एक्सचेंज कैसे करता है, व्हाई इज इट क्रिएटेड, व्हाट इज meandering, हाउ विल इट meander, व्हाट इज द साइकिल, एंड हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ साइकिल क्विकली। यहाँ तक क्लियर, वर्ल्ड में भी दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया, स्टेप्स भी दिखा दिया, और आपके पास ये स्लाइड भी है, और क्या बच्चे की जान लोगे, आ गया ऑक्लूडेड फ्रंट, ये किसी ने पूछा था, साइक्लोन पे आने सब लोग। एक चीज थोड़ा सा डिक्टेशन लेना चाहता हूँ जेट स्ट्रीम पर, ये तो सबको समझ में आ गया डायग्राम, सो यू मेकिंग और नॉट, सो प्लीज वंस मोर टेल स्क्वीजिंग वन, यू डोंट हैव टू गेट द स्क्वीजिंग पे क्लैरिटी, अब यश को स्क्वीजिंग बताओ, फिर वो सारा बताओ हाई लो, यश तुम्हारे आंसर्स मैंने पढ़े हैं भाई, एबीसी पता नहीं है और हम इसमें कॉनकॉर्ड कर रहे हैं, कॉनकॉर्ड पता क्या होता है, एबीसी तो अल्फाबेट होता है अंग्रेजी का, कॉनकॉर्ड होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो स्क्वीजिंग वाला बता दीजिए, तो इतने बड़े कॉन्सेप्ट ना करो, पहले ये कर लो, जो है उतना कर लो, आंसर आप ही ने सबमिट किया ना मुझे, वो आई सीन दैट, जल्दी से यहाँ तक क्लियर। मैं तो कह ये नहीं लिख सकते अभी, आपको अभी मैं क्लास में देता हूँ शॉर्ट नोट ऑन जेट स्ट्रीम्स, लिखो 10 मिनट, ये स्क्वीजर्स का भी हम देखें, हमने कहा ना शॉर्ट नोट 10 मिनट एवरीवन, चलो मुझे कोई टेंशन नहीं, अपने पास टाइम जेट स्ट्रीम शॉर्ट नोट, टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्या टाइम हो गया 13:13, कितना सही टाइम चल रहा है, 13:13 ऑन 31, नहीं नहीं भाई आप लोगों को स्क्वीजिंग वगैरह भी चाहिए, क्यों नहीं, शॉर्ट नोट तो देखें, स्टार्ट। Can write the answer।
एंड आई होप इसमें आपको टंग लिखने का कोई मौका नहीं मिला होगा, टंग बनाने की भी जरूरत नहीं थी। मधुकर कह रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स रिटन। मधुकर व्हेन द स्टूडेंट सेज ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स रिटन, मुझे ऐसा लगता है कि आज फिर नोट्स छापे लगता है, ये सुनो। आई फील कि स्टूडेंट ने फिर से मेरे नोट्स छाप दिए होंगे। 10 मिनट के शॉर्ट नोट, आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी मोर देन 200। नहीं मधुकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नोट्स जो मैंने बताया आपने वो लिखा है, मैं ये कह रहा हूँ 200 वर्ड्स में मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्सपेक्टिंग दिस इनटू दिस थिंग व्हेनेवर वी गेट अ शॉर्ट नोट दैट मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी। शॉर्ट नोट मींस राइट एवरीथिंग अबाउट इट, सो व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये सब आएगा। ट्रू और नॉट? सो माय इंट्रो वुड बी जिसके लिए बहुत सारे इंट्रोडक्शंस हो सकते हैं, बट आई रियली वांट टू मेक इट अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। सौरभ कह रहे नॉट मच आई राइट ड्यू टू रिकॉल। तो सौरभ एक बात बताइए ना, आप तभी आंसर लिख पाओगे जब आपने रटा हुआ है। So if somebody tells me that I'm not able to recall, everyone, you go to watch a movie. Let's be honest, okay? Let us not cheat each other. We go to watch a movie, and when we come out of the cinema hall, there's someone with a mic and tells us which scene did you like the most? Did you like the movie? What is the message of movie? Will you recommend others to watch this movie or not? What you did not like? Will you say sorry? I can't recall. That is why I can't say anything. Will it ever happen? A teacher told you everything. And now you're saying I'm not able to recall. You can say sorry, I'm not interested in giving any comment. No comment कह के जा सकते हो आप. But can you give me this कि recall नहीं हुआ? तो recall नहीं हुआ सौरभ तो एग्जाम पास नहीं होगा. रटेगा पहले जाएगा, सचिन सर ने जो बताया मैं रटूंगा तब होगा. तो बड़ी गड़बड़ है. And there are many people. इसलिए मैंने कहा ना वो स्क्वीजिंग बता दो, ये बता दो, मैं खेल में आता ही नहीं. I won't come in that खेल. आंसर मैंने आपके पढ़ लिया. बात बड़ी करते हो, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात होती है. सो आई एम इनटू प्रैक्टिकल टीचिंग. भाई मेरे को है ही नहीं ना वो सारी चीजें कि दिखा के चमकाना और ये वो देखो ये वो, मुझे पता है सिंपल नहीं लिख सकता है. 2 मिनट नहीं लगते सच्चाई को सामने आने में. एंड फॉर दैट आई एम अ लिटिल यू नो लाइक, मेरा नाम खराब होता है कि यार ये हर चीज को टीचर जो है आईना दिखा देते हैं, तो दिखाना चाहिए. तो सौरभ वही मैं बोल रहा हूँ, जो आपने बता दिया वो समझ आया, लेकिन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो ये समझदार वाले लोग ये एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं, और समझ का ही तो चैलेंज है कि नहीं समझ आया तभी तो लिख नहीं पाया. एवरीवन टेल मी समझ आया लिख नहीं पाया. समझ नहीं आया भाई, वेरी वेरी क्लियर. So atmospheric circulations are aimed at global heat balance in the upper atmosphere. A special wind flow jet stream also participates in this process. तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है. कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्लोबल हीट बजट का एक हिस्सा है जेट स्ट्रीम. लेट अस नो व्हाट आर दे. तो जेट स्ट्रीम्स आर अपर एटमॉस्फेरिक, पता है. जियोस्ट्रोपिक, पता है. स्विफ्ट, meandering, circumpolar flow of air flowing in west to east direction with details as shown in the diagram. Height बता दी, depth बता दी. True, that's what we are talking about. हो गया, एक डायग्राम भी बन गया. What are jet streams? Where are they found? What के बाद geography, where? Jet streams are generally found in the upper atmosphere near troposphere at the point of meeting of air masses where there is high temperature contrast. Yes, subtropical westerly jet and polar front jet are two cases of permanent jet streams. फिर मैं क्या बनाऊंगा? दो jet stream हो गया, where हो गया. Why and how are they created? So they are created. They lie in the westerly airflow. They are embedded in the westerly airflow in the upper atmosphere. Most of the airflow is geostrophic, but because of certain places of thermal gradient leading to horizontal pressure gradient, the air gets accelerated and strong meanders are created. यहाँ पर हम कहेंगे थर्मल ग्रेडियंट. डायग्राम भी बन रहा है, आंसर भी बना रहे, सब कुछ हो रहा है. Correct? They normally follow a straight path. However, it has been found that with time they start meandering. These meandering jet streams are called Rossby waves, which follow a 4 to 8 week cycle called index cycle. Straight. बन गया, ये भी बन गया.
what has been done, why and how has been done, when, where has been done. ठीक है. Since jet streams are associated with temperature contrast, when के लिए कह रहा हूँ, they are stronger in winter. Number one. Second thing is jet streams follow the path of sun, so they move north and south with the sun. तो वो भी दिखा देंगे, वो भी डायग्राम. लास्ट आएगा, the principal types of jet streams are number one, polar front jet stream. Number two, subtropical westerly jet stream. Subtropical westerly jet stream. Apart from that, certain temporary jet streams are also created, like tropical easterly jet and क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटोस्फेरिक नाइट जेट या पोलर नाइट जेट बोलते हैं, पोलर नाइट जेट. सर ये तो आपने बताया था, अब बता दें. और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल मेक दिस, एंड इफ यू रिमेंबर हेडली सेल, तो यहाँ पर 2 जेट स्ट्रीम भी बनाएंगे. jet streams impact on human life. So jet streams can create heat waves, cold waves. Jet streams control the path of which cyclone? They control the path of temperate cyclone. Jet streams can also lead to the movement of pollutants. In air navigation, pilots use jet streams favorably to increase their speed. Jet stream के साथ जाओ, वहाँ पर वो है. बताओ, ये आंसर है. ये शॉर्ट नोट होता है, सब कुछ बताना है jet stream के बारे में विद डायग्राम्स. कल भी बोला था, जो भी कहता हूँ घर जाके उसको कर लीजिए, बना लीजिए. कल किसी ने नहीं बनाया होता तो ग्रुप पे डाल देते. जो भी बोल रहा हूँ वो आपके सामने लिखा है, कम बोल रहा हूँ. एंड मेनी ऑफ यू सेड आई रोट इन 120 वर्ड्स, आई रोट इन 140 वर्ड्स. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन काउंटिंग माय वर्ड्स आफ्टर दिस, नो सर, यू हैड टू राइट शॉर्ट नोट, यू रिटन एवरीथिंग इन दैट. हीट एक्सचेंज हो गया, सब कुछ हो गया, सारी चीजें तो डाल दी. सिर्फ समझना चाह रहा था मैं, कुछ समझ आ जाए फिर मैं जो है भाई सिंपल. मैं तो ये कह रहा हूँ तो स्कूल लेवल है. अब आपने भी आंसर लिखा है मधुकर, आपने कहा सर मैंने कुछ और लिखा है, आपका नहीं लिखा. मोस्टली तो वही लिखा होगा जो मैंने बताया. बट डिड वी राइट द आंसर दिस पावरफुली? दिस गोइंग टू गिव अस मार्क्स. तो इसमें कहीं पे किसी को लग रहा है कि कहाँ पे स्क्वीजिंग हो रही है, कहाँ पर ये हो रहा है मीटरोलॉजी, ये कहीं नहीं होगा. ये आंसर ही नहीं लिख सकते. हमें आंसर लिखना नहीं आता, हमको फंडा देना आता है, हमें डिबेट करना आता है. हम ये कहेंगे, हमें ये भी पता है, वो भी पता है. कहाँ से पता है? अभी सीखा है नया नया. और कौन कह रहा है सर रिकॉल नहीं हो पा रहा? सो व्हाट वर यू डूइंग इन द क्लास अब तक? टी अभी बताया नहीं. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का बताऊंगा. आई बी टेलिंग यू व्हेन आई एम टीचिंग यू मानसून. इंडियन मानसून में हम बताते हैं. एक और जेट वहां पे हम बताते हैं, क्रॉस इक्वेटोरियल लो एटमॉस्फेरिक लो ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं फिनलेटर जेट स्ट्रीम. जो लोग मेरा इवनिंग का ज्योग्राफी कर रहे हैं, वहां पे मैंने कहीं फिनलेटर की भी बात की. ये सब आएंगे. जब चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था तो न्यूक्लियर लीक्स जो हुए थे, टू मॉनिटर दैट हाउ इट इज रीचिंग पैसिफिक, जेट स्ट्रीम्स को मॉनिटर किया गया था. When a volcano erupts, it is the jet stream which can transfer the ashes to a long distance. ठीक है. Jet streams, as I told you, in fact, the first time when we got to know about jet stream, that was because of the pilots. They suddenly saw कि एक डायरेक्शन में जाते हैं, अमेरिका टू जापान में एक डायरेक्शन में जाते हैं, so they get extra speed. दूसरे में the speed is cut down. So they found कि कुछ तो गड़बड़ है, and then they saw that these narrow meandering jets are there. अभी बुक्स में भी दिया हुआ, कौन सी बुक में दिया हुआ? होने को मेड सिंपल में भी होगा, सविंदर सिंह में भी होगा. बट आइडिया इज ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ऐसा तो नहीं था मैंने सोचा था एग्जाम आपको क्वेश्चन देना. आई डिड नॉट प्लान टू डू दैट, बट आई गिव यू. व्हाई डिड आई गिव यू? बिकॉज़ ठीक है, किसी ने कहा सर मुझे स्क्वीजिंग बता दो. मैंने कहा स्क्वीजिंग का क्या करेगा भाई? आंसर जो सबमिट करते हो, पता है मेरे पास आंसर कैसा आता है? मेरे पास ऐसा आंसर आता है, जेट स्ट्रीम इज वेरी फास्ट एयर इन द अपर एटमॉस्फेयर. इट इज गोइंग अप एंड डाउन इन द वेव मोशन. इट इज जियोस्ट्रोफिक. It is at 8 kilometer. It is this. उसके बाद index cycle. Index cycle was given by Rossby. They go and they start meandering. This meandering is because of conservation of angular momentum. Then a speed is increased. Then the speed is decreased. Then squeezing also happens. Jet stream is formed in the polar front. Their polar vortex is created. In fact, very strong cold waves in the Texas region and heat waves in the Russian are because of jet stream. Sir, marks दो. ये एक आंसर होता है. We do get such answers. नीली बोला सर सीरियसली मैंने भी ऐसा ही लिखा है. नीली मैं तो रोज मेरे पास ये आंसर आ जाता है. जो भी बता रहा हूँ उसमें जो भी अजीब बताते हो आप, whatever is scintillating, जो सुन के होश हो गया वो वाला लिखना चाहता है, और जो सही है वो नहीं लिखता है. This is the answer. प्रियंका बोल रहे सर मैंने भी ऐसे लिखा. प्रशांत भी बोल रहा है ऐसा होता है. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, I have said only one good quality of answer is first learn to write,
करेक्ट आंसर, उसके बाद हम उसमें एम्बेलिश कर देंगे। और मैं बता रहा हूँ कोचिंग के इंप्रेस करने के आंसर यही वाले दिए जाते हैं बच्चे को, अजीब अजीब भाषा में। Actually, the diastrophic theory of jet streams tell us this. Yes, the baroclinity happens at this altitude, and it is because of those baroclinic forces that the acceleration happens. कुछ भी बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, जो छापना छाप दे बेटा, बच्चा छप जाना चाहिए। और उसके बाद बोले कुछ समझ नहीं है, ये सिर्फ मुझे पता और कहीं पर नहीं है। पहली बात और कोई बता नहीं रहा, मैं तो यही बताऊंगा भाई, दिस इज व्हाट इज जेट स्ट्रीम। मैं क्यों बैरोक्लिनिटी से इंप्रेस करूं? बच्चा लिख नहीं पाया, बच्चा बैरोक्लिनिक बैरोक्लिनिक कर रहा है, उसे पता भी नहीं होता बैरोक्लिनिक क्या होता है। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट, एक और आंसर लिख के बता दिया, और कहोगे और लिख के बता दूंगा, जितने कहोगे उतने बता दूंगा। पहले वो होता है, उसके बाद उसमें मार्क्स एक्स्ट्रा के लिए हम इंट्रो पे काम करते हैं, कंक्लूजन पे काम करते हैं, देन वी गेट गुड मार्क्स। इसमें रिकॉल की कोई बात ही नहीं थी, दिस इज मोर अबाउट व्हाट यू अंडरस्टूड, वो तो लिख दो। ऑक्लूडेड फ्रंट, कल भी यही बताया था, सिंपल सी बात है कि बीच में दो एयर मासेस हैं, एक ने दूसरे को पकड़ा, वो ऑक्लूड हो गया। अभी जो हमने देखा, आप ही ने तो देखा, ये अपर एटमॉस्फेयर में एक पॉकेट कट गई ना, एक पॉकेट कट गई, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा वार्म एयर था, नीचे का वार्म एयर अगर कट के कहां पहुंच गया है, दूसरे उसमें हो गया ना, यहाँ ऑक्लूजन है। सर ये तो अपर एटमॉस्फेयर भाई, नीचे तक कनेक्टेड है ना, सब जगह तो वार्म ही एयर थी, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे भी हो सकता है। बट देन द फैक्ट इज कि अगर हम विजुअलाइज नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, तो गड़बड़ है। तो दोनों तरफ से एयर है, देयर आर 3 एयर मासेस, कूल एयर एंड कोल्ड एयर। व्हेन द कोल्ड एयर कम्स एंड कैचेस अप विद द कूल एयर, तो बीच का जो एयर मास होता है वार्म एयर इज टोटली लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। अब जो फ्रंट बना, पहले फ्रंट था वार्म और कूल के बीच में, पहले फ्रंट था, ये एक फ्रंट था और ये एक फ्रंट था, दो फ्रंट्स थे। व्हिच फ्रंट वाज दिस, व्हाट वाज नंबर 1, नंबर 1 वाज व्हिच फ्रंट भाई, वार्म एयर इज ट्राइंग टू एंटर। वो देखो अभी भी पूर्वी कोल्ड लिखेगी, अरे बेटा स्लोप से भी पता चल जाता है बेटा वार्म है। रिक्वेस्ट है, घर जाके पढ़ा तो करो बच्चों। ये वार्म फ्रंट है, कोल्ड बताया था कल, ये स्टीप होता है, ये आगे बढ़ गई है, उसको धक्का दे रही है, ये देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा, तो ये भी ऊपर जा रहा है। This one is moving at a speed of 10 kilometers per hour. This one is moving at a speed of 15 kilometers per hour. And there is a gap of 50 kilometers between them. कितने घंटे में cold will catch up with cool? Tell me. How many hours cold will catch up cool? उत्ते को 3 hours, 2 hours. क्या कर रहे हो यार? मैथमेटिक्स देख लो यार लोगों का। 2 hours. भाई ये 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी रेट ऑफ कैचअप इज 5 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर करना है, 50 डिवाइडेड बाय 5, 10 आता है, 10 आवर आएगा। आई थॉट इजी दे रहा हूँ, 50 बाय 5, उसमें भी आंसर 2 और 3 निकल कर आया, और मैं स्क्वीजिंग बता दूंगा आप लोगों को। गलत टीचर के पास आ गए हैं, स्क्वीजिंग वाले टीचर अलग ही हैं, क्योंकि उन्हें आता है सब। 10 घंटे बाद दिस विल कैच अप, बट व्हाट इज इन बिटवीन राइट नाउ, दैट इज वार्म एयर। दैट वार्म एयर ट्राइज टू पुश, दैट वार्म एयर इज ट्राइंग टू पुश द कोल्ड, इट कैन नॉट पुश, सो द वार्म इंस्टेड इज गेटिंग अपलिफ्टेड। यही होता है वार्म फ्रंट पे। yesterday when I told you कि वार्म फ्रंट पे ये होता है। फिर होमवर्क लिख के दो बच्चों, फ्रंट के डायग्राम्स बनाना अपनी डायग्राम बुक में, तब जाके होमवर्क करोगे, तो अच्छी बात नहीं है, तो कर लेना चाहिए था। वार्म फ्रंट इज जेंटल, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट एबल टू पुश डिसाइसिवली। ठंडी हवा जो है आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जब कोल्ड एयर यहाँ पर है, एंड इफ इट इज अ कोल्ड फ्रंट व्हिच इज द एग्रेसर कोल्ड, सो कोल्ड एयर डिसाइसिवली ग्राउंड पे मूव करती है ऐसे, क्योंकि हमेशा क्लोज टू ग्राउंड रहती है ना। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वार्म फ्रंट, वार्म एयर जब पुश करती है तो कोल्ड एयर स्टेज क्लोज टू द ग्राउंड। वो ऐसे थी ओरिजिनली, वो ऐसे बेंड हो जाएगी, बट इट विल नॉट मूव। सो वार्म फ्रंट दे विल से मूव्स वेरी स्लोली ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड वार्म फ्रंट मूव्स स्लोली। मनीष कैसे आना हुआ बच्चे? कल भी ऐसे ही बीच में अचानक प्रकट हुए थे, फिर अजीब अजीब प्रश्न पूछने लगोगे। अगर मिस ही कर दी है तो पूरी रिकॉर्डिंग देख लेना यार। क्यों मनीष? पहले आप 1 आवर लेट थे, उसके बाद आपने बीच में कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे। अगर मिस हो ही गया फॉर सम रीजन, आई कैन अंडरस्टैंड, पूरी रिकॉर्डिंग देख लेना, तो मिडिल में बच्चे एक आंसर भी लिखवा लिया। एवरीवन डू वी अंडरस्टैंड? तो ये वार्म एयर पुश तो कर रहा है, वार्म एयर इज पुशिंग, वार्म एयर इज पुशिंग, बट कोल्ड एयर बेंड हो जाएगी और वो थोड़ा सा ही मूव करेगी। कोल्ड एयर इज मूविंग वेरी स्लोली बिकॉज वार्म इज नॉट इफेक्टिवली पुशिंग इट, बट व्हेन कोल्ड चूजेस टू मूव, इट मूव्स ऑन द ग्राउंड डिसाइसिवली। सो इट इज सेड दैट कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर कंपेयर्ड टू वार्म फ्रंट, बिकॉज वार्म फ्रंट का, वार्म एयर का पुश इज नॉट दैट इफेक्टिव, इट इन फैक्ट राइजेस अप। समझ में आ रहा है? ठीक है। द सेम टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग भी रहता है, इसलिए सर मनीष बहुत सारी कोचिंग कर रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ के डाउट यहाँ आकर पूछने लगते हो अजीब अजीब से, तो अब बीच में आए हो, शाम को देख लेना ना, क्या दिक्कत है? अपनी सहूलियत पे देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपके डाउट्स जो है, मैंने कल भी बोला था। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो अभी बीच में अटेंड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूँ, एक साथ पूरा करिए।
इज एवरीवन ओके विद दिस? आगे बढ़े। तो ऑक्लूजन बिगिंस, ऑक्लूजन बिगिंस का मतलब ये दोनों यहां पर टच कर गए। कितना घंटे में किया होगा? 10 आवर्स में, है ना। दिस वन कॉट अप। क्यों? रिमेंबर, ये तेजी से बढ़ रहा था। किस स्पीड पर? 15 किलोमीटर पर आवर। ये स्लो चलता है। I just told you warm front moves 10. Effectively, you have a difference of 5. So आप क्या catch up कर लेंगे? You will catch up. Now, when you are catching up, बीच में जो पहले आप यहाँ पे थे ना, first you were here, everyone pay attention, you were here, but what you have done, you've caught up. तो ये जो बीच का इतना सा हिस्सा था, वो जो air थी, that air has been lifted up. उतना air ऊपर चला गया। अच्छा, अगर आप और आते हो तो और कहाँ पे जाओगे? You will come here. Yes or no? True or not? You will come here. So ये वाला हिस्सा अभी तक तो warm front है. What will happen? This will also go up. Progressively, the warm front will be removed. और उसकी जगह फाइनली क्या बनेगा? इन दोनों के बीच का फ्रंट बनेगा। इन दोनों के बीच का फ्रंट बनेगा। एंड दिस फ्रंट इज कॉल्ड द ऑक्लूडेड फ्रंट। याद रहेगा, किसी ने मुझसे क्लास के बिगिनिंग में पूछा, सर ऑक्लूडेड रिपीट कर दो। रिपीट हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? कौन इन्वॉल्व है? एयर मास ए, एयर मास बी एंड एयर मास सी। इज एवरीवन ओके? ऑक्लूजन का रूल नंबर 1, 3 एयर masses are involved. Can we say air mass A moves faster and catches up with C to dislocate B? Is that also okay? The second point also clear to everyone who don't know occlusion? ठीक है। When they come here and they two of them meet, B और इमरान खान, ये तो अलग हो गया ग्राउंड से। Is everyone okay? This is where I would say occlusion begins. क्योंकि अभी ये सारा वार्म है ना, ये सारा वार्म है, ये सबको हटाएगा। क्लियर? Now everyone pay attention. How many air masses are left on the ground now? Only two. Only two. Is everyone okay? Only two are left. Which one is the aggressor, A or C? A is the aggressor. Now forget B. B to forget. A is the aggressor. So the name of the occluded front should be what? A or C? It should be A. Everyone okay? Now A and C are colliding with each other. Two airs. One of them has to go up. Which one will go up? C, C, C. What makes you say C? Sir, what makes you say C will go up? Saurabh says C is light. What makes you say C is light? What makes you say C is light? Sir, because out of cold and cool, C is warmer. If it is warm, then it will rise. ठीक है, C will rise. तो अगला स्टेज क्या होगा? Everyone, A will continue, and that part of C which A has eaten, वो ऊपर चला गया. Can I say the front will look like this? Is everyone okay? यहाँ तो B है ही. C का कुछ पार्ट किसने खा लिया? A consumed. Why? Because that part went up. Because you said C is warm, relatively warm. A you said is cold. इसको क्या कहेंगे? Cold front occlusion. Is everyone okay? Who was causing occlusion? Cold was causing occlusion or not? Occlusion समझ में? Instead of two air masses, how many air masses are there? 3 air masses are there. They have been pinched off. They have removed B, and A and C are now fighting. And depending on their temperature, C is also progressively being removed. And यहाँ से occlusion began. और उसके बाद इतना area occlude हो चुका है. So can you see this area? Whatever keeps on getting occluded, its symbol will keep on changing. जो बचा हुआ है वो warm ही रहेगा. ये cold ही रहेगा. Can you see this remaining is warm and this will be cold only? Is everyone with me? What is this diagram? What is this diagram? Everyone with me? यहाँ तक clear? कोई question तो पूछे. Stages of formation. पहले वो खाया, फिर ये खाया, ये बड़ा होता जाता है occluded front. And which one is getting consumed? The warm front. ये धीरे धीरे इसको और खाता जाएगा ना. ये. Eventually what will happen? Warm will be removed. ठीक है? And temperature contrast will also be removed. Everything will become cold or not? यहाँ तक clear? Cold type occlusion. समझ में आ गया? Cold type occlusion. Everyone okay? Now I am giving you a hypothetical situation. C, air C is 10 degrees Celsius and B is 30 degrees Celsius. And B is trying to invade into C. What front is this? Warm front or cold front? I'm giving you a figure, everyone. B is 30 degrees Celsius. Just focus on this. Just focus on this. Okay? Perfect? Okay. This is warm front, everyone with me. Now, let's come to this. This is 20 degrees Celsius.
and this is 30 degrees Celsius. 20 is trying to invade into 30. Which front is this? Which front is this? Sir, this is cold front. वो देखो warm front बोल गई प्रियंका, पता नहीं क्या नशा करते हैं भैया, ठंडी हवा यार. 20 is trying to invade into 30, तो वो warm कैसे होगा पता नहीं यार. ठीक है ना, आगे तो कैसे बढ़े? Is everyone okay? Now what happens is gradually A reaches, occlusion begins. A is at 20 and this is at 10 degrees Celsius. Occlusion has begun. A is moving faster on ground. A आ गया, उसने टच कर दिया. Now A will move further. A is again the aggressor. Remember, A is aggressor. A is trying to enter C now. But the problem is, A is relatively warmer. And the occlusion will be named after the aggressor. Who's the aggressor here? A is the aggressor. So this occlusion will be called, will it be called a cold front occlusion? This will be called a warm front occlusion. Warm front occlusion कैसी होती है सर? देखिए ये जो cold air थी ये आ रही थी, बट वहां पर 10 डिग्रीज वाली एयर है. इस बार ये लाइन पूरी होगी और ये वाली लाइन डॉटेड हो जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज दिस सी वाज एट 10 डिग्री सेल्सियस and this A was at 20 degrees Celsius. This one is trying. Occlusion तो हो चुका है, B तो ऊपर गया ही गया है. But now C will not rise. In fact, this will be destroyed and this will be rising. This is cold front occlusion. This is warm front occlusion. I have simply kept the same rule. The name of the new front will be decided by who is the aggressor. अगर पीछे वाली हवा ठंडी है relatively, you call it cold front occlusion. पीछे वाली हवा अगर गर्म आ रही है तो relatively that will be called warm front occlusion. Occlusion भी दो तरह की हो सकती है. And in the cold front occlusion ये वाली लाइन को खा जाएगा वो, ये वाली, और warm front occlusion में इसको खाएगा. Do you understand? In both the cases, which one will rise? The relatively warm one will rise. इनको डाउट है? फिगर दिखाता हूँ. CP 10 डिग्री सेल्सियस, MP 15 डिग्री सेल्सियस. Warm air. Who is the aggressor? CP. Out of the two, who is colder? This one. So ये तो अपना ग्राउंड रखेगा. इसका जो था वो चॉप ऑफ हो जाएगा. Do you understand? Where did it go? ऊपर चला गया. Steep कैसी है? Slope है. Steep slope, no? Which cloud? Cumulonimbus cloud. Cold. I wrote cold front occlusion. Are you okay with cold type also? I call it cold front. ये बुक उसे cold type कह रही. Did you understand what is occlusion? And occlusion can be cold front or cold type and warm type. तो warm type में क्या होगा? पीछे की एयर क्या होगी? पीछे की एयर वार्म है, आगे की एयर ठंडी है. And they have come and met. They have come and met. Yes. So अब क्या होगा? This will be cool. Cold will hold its ground and this will be eaten. Is everyone okay? True or not? चलेगा. अच्छा, the front, because this is warm type occlusion, so slope थोड़ी सी gentle होगी. And what are the clouds? Clouds थोड़े से. So in the examination, do we understand cold type और warm type में क्या अंतर है? पीछे से कौन सा आ रहा है? That is going to be decided. Occlusion समझ में आया? किसी ने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था सर occlusion रिपीट करिए. I have repeated occlusion for you. Have you understood occlusion? Have you understood types of occlusion also? I also want to tell you where I wrote occlusion begins. I also want to say temperate cyclone begins. क्योंकि ये जो एयर ऊपर जा रही है, ये एयर कैसे ऊपर जाने वाली है? When will it end? जब ये पूरा कंज्यूम हो गया. If everything becomes cold or cool, temperate cyclone is over. Temperate cyclone तब तक रहेगा जब तक temperature contrast. So temperate cyclone I have not done, but can I say jet streams and temperate cyclones? What is the driving force? Can you tell me what is the driving force? एक ही आंसर है दोनों का. Temperature contrast. What is their ultimate outcome? Temperature, homogeneity, reduce contrast. And how do you reduce contrast? By heat exchange. Heat exchange कर दो, contrast खत्म कर दो. Contrast खत्म होते ही वो. Is everyone with me? Any questions, any doubts? Please ask.
यहाँ तक क्लियर? साइक्लोन्स, दो तरह के साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन. व्हाई डू वी नीड टू स्टडी साइक्लोन? क्विकली क्विकली क्विकली, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी साइक्लोन? जल्दी से बताएं. सर सिलेबस में है इसलिए पढ़ते हैं, वरना मैं कभी नहीं पढ़ता सर. ये देखो सबने ये लिखा है, play a role in heat exchange. We need to study because they impact our lives. So there are so many things that impact our lives. मैं जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा. Trust me, compared to differentiation integration, cyclone is more important. मुझे differentiation integration किया था और अकबर की कहानी से ज़्यादा important है cyclone. It really impacts the whole climate system that we are in. आपके शहर में टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, सूखा है, बारिश है, सब कुछ है. They impact a huge thing. And I too want to tell you that they have a big role in the thermodynamics of planet Earth. They are thermodynamic actors. True or not? The term cyclone refers to the circulation around any low pressure center. Any low pressure center regardless of size and intensity. So जो cyclone आप सुनते हैं, that is not anything cyclonic is low pressure. Anything cyclonic is low pressure, but cyclonic storm जब हम बात करते हैं वो अलग हो जाता है. Hurricanes, mid-latitude cyclones are two types of cyclones. Whereas extratropical cyclones is another name for mid-latitude cyclone. The tropical cyclone is described as hurricane. तो इसमें हम फंसते नहीं, हम सिंपल सी चीज देखते हैं. जल्दी से एक मैप बनाएंगे एवरीवन. क्विकली मेक अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. क्विकली मेक दैट 30 डिग्री लाइन. अगर आपका मैप ठीक है तो 30 डिग्री लाइन भी सही जगह पर आ जाएगी. अगर आपका मैप ऐसे ही बना है तो दिक्कत है. 60 डिग्री लाइन almost at the same distance. 30 north, 60 north, 30 south, 60 south. Is everyone okay? Put a cross over here. No cyclone comes here. Yes. Put a cross here also. So on these pressure belts, cyclones don't come. Why? Because this is तो high pressure belt और cyclone क्या होता है? Low pressure होता है. And इधर क्या नहीं है? Coriolis force is equal to 0. समझ में आ गया? दो reason why this is there. Why am I putting this cross? Because ये belt है. This is not a line. Generally 5 degrees north to 5 degrees south. Yes, 5 degrees north, 5 degrees south. Is everyone with me on this? अब यहाँ पे कौन सी विंड है? यहाँ पर विंड है ट्रेड विंड. Cyclones which are created over here, everyone, the cyclones which are created over here, they will travel in this direction. ठीक है. सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ. रिमेंबर, सदर्न हेमिस्फीयर में वो बोलते हैं अटलांटिक में साइक्लोन नहीं आता है. These are your tropical cyclones. What are these? These are your tropical cyclones. Tropical cyclones are also called as hurricanes, cyclones, typhoons, चक्रवात. चक्रवात और साउथ में क्या बोलते हैं? विली. विली. फिलीपाइंस में क्या बोलते हैं? बेजियो. ये इनके नाम. These are tropical cyclones. They are created only on water. So Beijio, hurricane, cyclone, typhoon, चक्रवात, विली विली. विली विली in Australia, typhoon in Japan, Beijio in Philippines, hurricanes in Caribbean and North America, cyclones अपना चक्रवात cyclones in Indian Ocean. Is everyone okay? Another set of cyclones which are created here, these are जो मैंने अभी आपको बोला frontal cyclones.
Remember, fronts are created. This is where we have our polar front, and remember that streams, they travel west to east. So these are the temperate cyclones. These are the temperate cyclones. They travel west to east because they lie in the westerly belt. They can travel over both latitudes, land as well as water. These are called frontal cyclones. ये front से बनते हैं, जबकि tropical cyclone is non-frontal. These are non-frontal. ठीक है? इन्हीं को extra tropical cyclone भी बोलते हैं. Extra tropical cyclones, and they are also called as wave cyclone. I hope you can understand. Wave is that of Rossby wave. Front also forms in the form of wave. James ने लिखा है tornado. Tornado is not temperate cyclone. So tornado is a totally different phenomena. Tornado and water sprout. Tornado only on land and water sprout only over oceans or seas are micro circulations, smaller variant of these. ठीक है, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है. और उसी में एक और चीज भी है, थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म्स ये अलग है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है. हाँ, ये भी एक तरह की ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी है. ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी. Tornado, water sprout and thunderstorms are generally formed in the tropical areas, but they can be thunderstorms तो ऊपर भी हो सकते हैं. Tornado और ये तो tropical ही instability. Is everyone okay? तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें. So इंडिया को कौन हिट करता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन. और यूके को कौन हिट करता है? टेम्परेट साइक्लोन. Temperate cyclones are non-devastating, non-destructive. They are considered as a normal part of. They are considered as a normal part of temperate weather. ऐसा नहीं है कि साइक्लोन आ रहा है बच्चों भागो. They are normal. They are normal. They are involved in heat and moisture transfer. They have a definite life cycle. But tropical cyclone on the other hand is temperamental. इसकी मर्जी, जो करना है भैया यही करता है. अच्छा बुरा जो करना है कर सकता है. इस सब का बाप है. Is everyone okay? If any question, please ask. चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द साइक्लोन. साइक्लोन समझ में आ गया क्या है? तो साइक्लोन की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो जल्दी से लिखेंगे. ये पेज मैंने डेफिनेशन के लिए रखा हुआ है, व्हाट पार्ट के लिए रखा हुआ है. ठीक है. साइक्लोन्स रेफर टू thermodynamic systems associated with disturbed atmospheric conditions. पहला. दूसरा, severe low pressure, closed isobar, spirally rotating winds, strong winds, moderate to heavy precipitation. Very strong in tropical cyclone and very heavy in tropical cyclone. बहुत strong wind होगी, clouds होंगे, सब कुछ होगा. That is what is going to be there. As a convention, wind direction convention. The spiral direction. Why does it spiral? Due to Coriolis deflection. Spiral direction is that cyclones spiral anti-clockwise in northern hemisphere
क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। याद रहेगा, ये याद रहना होता है, बहुत जरूरी है, ये कन्वेंशन याद रखना है। साइक्लोन्स, तो अगर एयर ऐसे चल रही, which hemisphere is this? Northern hemisphere. This is what cyclone is. ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर का साइक्लोन क्लॉकवाइज हो जाएगा। Why this difference, sir? Again the same thing. Coriolis force deflects to the left in the northern hemisphere, to the right in the southern hemisphere. ये तो हुआ साइक्लोन का। एंटी साइक्लोन देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज एन एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन इज नथिंग बट हाई प्रेशर। ये बताइए मुझे, हाई प्रेशर पे डाइवर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस होता है? एयर कन्वर्जेस एट हाई प्रेशर और डाइवर्जेस? सर हाई प्रेशर इज ऑलवेज मोर एयर, नो? सो एयर का डाइवर्जेंस हो रहा है कहां पर? आइसोबार्स पर। कौन से आइसोबार्स हैं? क्लोज्ड आइसोबार्स। इज एवरीवन ओके? एयर ऐसे जाना चाहिए। ट्रू, this is how the air wants to normally diverge radially outward or not. Which force is causing it to move radially outward? Can anyone tell me which force? Which force is causing the air to move radially outward? तो सही दिमाग लगाओ तो पीजीएफ ही आएगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल, कहां से आ गया सेंट्रीफ्यूगल पे? हाई है, बाहर लो होगा तभी तो जा रहा है। क्या है सेंट्रीफ्यूगल? सब नशे में। मैंने कोई सेंट्रीफ्यूगल की आज तक बात नहीं करी भाई। एयर ऑलवेज मूव्स बिकॉज ऑफ पीजीएफ, 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 पीजीएफ। अगर अंदर हाई है, सर आपने ये नहीं बताया था ना बाहर लो है। अरे ये बताना पड़ेगा क्या? रिलेटिव तो होता है सेंट्रीफ्यूगल। ये नहीं बोला भक्ति की वजह से सर, अपनी भक्ति के बल पे बाहर आती है ये हवाएं। कहां जेल में बंद थी सर, पुट कर आई हैं। नवरात्र आ रहे हैं सर, माता का आशीर्वाद लेने के लिए हवाएं बाहर आ रही हैं सर। नाउ द प्रॉब्लम इज पीजीएफ इज इंपैक्टेड बाय Coriolis force in the northern hemisphere, and that is towards the right. Yes sir. So effectively, how will the air move out? समझ में आया चक्रण क्यों हो गया, क्यों घूमना शुरू हुई? Why did the air start spiraling? And overall, what is the direction of the spiral? Clockwise or anti-clockwise? समझ में आ गया क्लॉकवाइज का मतलब क्या था, कैसे आता है ये? सर अभी तो आपने एंटी क्लॉकवाइज बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अभी वो साइक्लोन का बताया था। अगर बीच में लो हो तो वो साइक्लोन का था। तो रूल क्या है? साइक्लोन्स आर एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी साइक्लोन्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में वो पलट जाएगा। हाउ वुड यू रिमेंबर? हाउ वुड यू रिमेंबर? तो मेरे ख्याल से इसमें लिखा हुआ, कौन सी किताब है ये? मुझे बुक ही नहीं दिख रही। डीएस लाल, डीएस लाल में लिखा है ANC, एंटी क्लॉकवाइज in the northern hemisphere is your cyclone. ANC याद करना है। Do we get that? So my teacher who was telling me, UPSC की कोचिंग में, he told me, देखिए नेल्सन मंडेला पता है आपको? हाँ सर, उन्होंने पार्टी बनाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मैंने कहा हाँ सर, तो उससे याद कर लो ANC, एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन इज क्लॉकवाइज। याद रहेगा। मुझे तो कोचिंग का टीचर था। I had to been trained in meteorology before that. Meteorology में टीचर ने हमें पहले बता रखा था ये सब खेल खेलना ही नहीं है। All you have to write is N लिखो और S लिख दो और एरो लगा दो, डायरेक्शन पता चल जाएगी। Cyclone in northern hemisphere is cyclone in northern hemisphere. What is the direction? Anti-clockwise. Southern hemisphere is clockwise. जैसे मर्जी कर लो। So कोचिंग वाला बुक वाला पढ़ना है, बुक वाला पढ़ लो, मेट्रोलॉजी वाला पढ़ना है, पढ़ लो, याद करने की जरूरत है। So that is there now everyone, your homework जो आपको बुक में भी चैनल पे लगा देना ग्रुप पर, the difference between cyclone and anti-cyclone, sorry not cyclone and anti-cyclone, differences between tropical and temperate cyclone। कल कराएंगे इसको, साइक्लोन आज हो नहीं पाया। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, आई थिंक एक क्लास और हमें क्रिएट करनी पड़ेगी क्लासिफिकेशन के लिए, बट दैट्स ओके, ये तो करने का नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, डिफरेंसेस, हाउ मेनी डिफरेंसेस? at least 10 differences। कहाँ से मिलेगा? बुक पढ़ो ना, एनसीईआरटी पढ़ लो, और क्या कहते हैं सविन सिंह देख सकते हैं आप, डीएस लाल अगर आपके पास है वो देख सकते हैं। क्लियर? 10 एटलीस्ट बोला, अगर आपको 15 मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। फिर मैं हैंडआउट भी दे दूंगा कल, ठीक है? यहाँ वाला यू कैन सी बहुत बड़ा हैंडआउट है, कल का ही है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप गो थ्रू भी कर लेंगे तो भी इनसे भी निकल जाएगा। ये जो स्लाइड आपकी लगी हुई है इससे भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस? ये डायग्राम आप पहले ही बना चुके हैं, ये वाले डायग्राम आपसे बाद में बनवाऊंगा कल।
मिड लैटिट्यूड साइक्लोन वो कुछ नहीं है. कैन यू सी ये जल्दी से कैचअप करेगा ना. हु विल कैचअप? कोल्ड विल कैचअप फास्टर. व्हेन इट कैचेस अप व्हाट विल हैपन? ऑक्लूजन विल बिगिन एंड आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू. और ये ऐसे दिखाई देगा. कल आपको एक थ्योरी भी बताऊंगा. द थ्योरी इज कॉल्ड पोलर फ्रंट थ्योरी. किसने दी थी? 2 नॉर्वेजियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट. क्या नाम है? सो इंडियंस इसको जर्किन जर्किन पढ़ते हैं नहीं. ये जर्किन जर्किन इनका नाम है ब्योकनेस एंड ब्योकनेस बाप बेटा थे जिन्होंने इस पर काम किया. पोलर फ्रंट थ्योरी फॉर टेम्परेट साइक्लोन कल डिस्कस हो जाएगी. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी बताऊंगा. टॉर्नेडो भी बताऊंगा. टॉर्नेडो पूछ रहा था कोई? टॉर्नेडो भी बता दूंगा. कल थंडर और लाइटनिंग भी बता दूंगा. तो सब कल आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट सब पता चल जाएंगे. और बताइए क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन जरूर रह जाएगी. क्लासिफिकेशन का हमें देखना पड़ेगा. वील हैव टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दैट. क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? यहां तक क्लियर? फिर से रिक्वेस्ट है, अगर प्रॉब्लम है तो अपना जल्दी से रिवाइज कर लो. पिछला क्लाइमेट, बेसिक क्लाइमेट, जो भी पॉइंट जहां फंसे हो उसको जाकर रिवाइज करो ना. आंसर राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया क्लास में, दैट इज इंपॉर्टेंट. अभी आंसर सबमिशन की चिंता नहीं करो. जो फ्री आंसर्स लिखते हो ना उसकी जगह जो एक सैंपल आंसर आपके सामने क्रिएट करता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट. अच्छी तो मैं भी कर सकता हूं. एवरीवन हु रेड माय आंसर डिड यू फील मैं कर सकता. और डिड आई मेक इट समथिंग इंपॉसिबल आउट ऑफ द वर्ल्ड? नहीं सर, तो इजी था यार, कर तो सकते सब. आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट. आई डिड नॉट ब्रेनस्टॉर्म लाइक दैट. आई डिड नॉट थिंक ऑफ स्ट्रक्चरिंग इट. आई वाज राइटिंग व्हाटएवर वाज कमिंग रैंडमली टू मी. यू विल राइट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. दैट्स अ बिगिनर्स लेवल. बट कैन यू थिंक लिखने से पहले सोच लिया जाए. चूज योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक. So choose your format, choose your style, choose your content before you write. And did I take too much time? No, I did not take too much time. Sir, with practice, can we also reach there? 100% you will reach there. Get that? So thank you. Evening class, as I told you, is about agriculture, Indian agriculture and Indian population. And then 9 o'clock, we also have the environmentics. Thank you. Bye-bye. See you in the next classes. Take care.